Hello, friends. Good morning. And today is December 27th, and we are seeing, it's a chilly morning, and so I want to basically see what are the headlines, what is happening today. What are the things which are affecting us in the global news? So, real quick, I will actually read the certain news with you. Let me see. Can I share my mobile with you? So just give me a minute. I will just see if I can share my mobile. Okay, so now you can see my mobile. So as I was talking about the Delhi fog, nearly 110 flights are cancelled in Delhi. So this is the latest information. So if you're planning a trip, make sure that you look at the weather and accordingly plan, because you don't want to basically get delayed or altogether your trip getting cancelled. So make sure that you have taken care of that. And then the other information is about the COVID. So there are COVID cases, especially in the south of India. People traveling and bringing this new variant of COVID back to their home states, and then it is spreading. I think there are some fatalities also because of COVID. All right, what else is happening? I mean, I don't want to talk about politics here. So let's look at the business. Hope you can see what I'm reading in my mobile, because I'm sharing my mobile with you. So let's go to the business section. What is happening? What is worth the while for us to read? All right, so the CFO moved. The Wipro CFO changed job, switched job, and the CFO joined Cognizant and got a legal notice from Wipro. Well, I think this is something wrong. There should be freedom to switch between companies to everybody. Companies not allowing employees to quit and basically joining other competitors, I think that is wrong, because then you're stopping the employee to grow in their own career. Nevertheless, this is the information that the CFO, ex-CFO of Wipro, has been sued by Wipro because that person has joined Cognizant. What else is important which is happening around us? Okay, so can you see, this is the new upcoming Mahindra electric SUV, so complete electric vehicle in 2024. So wait for it. There will be this new launch, amazing looking vehicle. As you can see in my mobile screen, this is an amazing looking SUV, completely electric, made by Mahindra, Indian product. And I'm sure there will be more electric vehicles launched next year, because the electric revolution is just starting in India. Let's see what is happening in the space of technology. Okay, so OnePlus 12 mobile phone will be launched in the month of January. So after just few days, the 12th edition of the brand killer, the monopoly killer, the one mobile, which is known as OnePlus 12, version 12 will be launched in the month of January. Very anticipated. All right, so nothing much. Let's look at in the field of science. Although we are starting after this with the science section, but what is happening today? Well, NASA has now identified that there is a 70-foot foot asteroid
which is now racing towards Earth. So we have to see if this is going to hit the Earth. Although it is racing, it is now coming towards the Earth. So we have to see if it is going to strike. And important news is solar storm is going to strike the Earth today. These are the storms which are now being monitored very closely, because these solar flares, which actually creates the solar storms, which affects the planets, hit the planet. The solar storms have the capability to disrupt our electronics. So this is an important event which is going to strike Earth today. All right, so we know that the 2024 is an important day for India ISRO, because the Gaganyaan trial, human trial spacecraft will be launched in 2024, and therefore let's keep our hopes alive and keep following that, because I think there are a lot of tests being conducted, and this trial will also be among the tests before the actual humans fly into the space. So this is a trial flight of Gaganyaan, which will be conducted in 2024. Dates are not yet announced, but nevertheless this is something important. All right, so I think this is these are the few important items today that are important. So don't go anywhere, friends. I will be joining back after a short break, and we will start with the science section. Hello friends, and you can see the program guide, the viewer guide is given here with the timestamps. So if you're looking for some subject which is very specific, which you would like to watch, you can actually return at that time. So there are a few comments that I have seen, and they are for the next program. So I look at the timestamp and then join back again. This section is for the science buff. So let's begin our science understanding, and today we are going to discuss something very, very interesting, and what that thing is going to be. It's about basically identifying life in our solar system and beyond. Now we are actually seeing that there are several exoplanets, nearly 5,000 have been detected so far, and these planets, which are exoplanets, are the planets not around the sun, but they are revolving around other stars in the neighborhood. Now we have identified 5,000 planets. Although the galaxy is a huge, large place, there are many planets. And we now know that there could be trillion stars in our galaxy, so there could be multi-trillion planets. However, our limitation is basically because of the technology that we have, and based on this limitation, we have been able to see only 5,000 planets so far in very close vicinity of our sun. Nevertheless, even in this small footprint, we have been able to find nearly 17 planets which could harbor life and which could have liquid ocean.
So what determines, and we know water is very important for life, as we have seen, because the liquid water exists on Earth, and so far we have not been able to detect any life in any other planet within our solar system. So liquid water, presence of water may be important for kickstarting the life. So if it has happened on Earth, it could happen on one of the exoplanet which is out there. And now among these 5,000 planets, scientists have found that there are 17 good candidates which could have liquid water, huge oceans, maybe water world. So 17 are there, and we are going to discuss about how we can identify that there is water on those planets, etc. So before we start, let's look at some basic data. The green belt that you see here is the area around each star described as the habitable zone. Now when we talk about habitable zone, this is something which is where there could be existence of water. So far our driving force has been look at the water, where the water could exist in the liquid form, and the water can exist based on the distance from the star, because it's neither too hot, because if it is too hot, as you can see in the middle, the close orbits, the planets which are orbiting very close to the star will have high temperature, and the water will evaporate, may not exist as liquid. And if you go beyond this green zone, then water will actually freeze up and will not be available in the liquid form. So we know this, and depending on the size of the star, the habitable zone will the size of the habitable zone also increases. As you can see, if the star is small, the habitable zone is much closer to the star. If the star is the middle size, just like our sun, habitable zone is where the Earth is. And if it is a much larger star, then habitability will be widespread in the outskirts of the star system. Not really outskirts, but it has to be very far off, because at that distance only the liquid water will be able to exist. So now we have figured out that there is a mechanism, and if we are looking into these areas, then we may find a planet with rich water, oceans, rivers, lakes, and also weather system. So I think that is the first thing. However, the other ingredient that is required for life to kickstart is carbon, because carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, these are the four elements. These are the first four elements which are required for life to kickstart, because we are all made of carbon, nitrogen, oxygen, and hydrogen. Hydrocarbons, as we call it, all the biology is made of hydrocarbons, and water is the medium where everything get mixed up and the permutation combination happens. So we essentially, these elements are very abundant across the universe. So if there is water on those planets, the chances are there will be carbon, there will be nitrogen, there will be hydrogen, there will be oxygen, very, very abundant material. And therefore, if the life started on Earth, there is no reason that it cannot start on the other exoplanets where there is water on the surface. So let's look at what are the other parameters that may be important. We have discussed water, we have discussed carbon, we have identified the habitable zones where we should look when we are looking into outside the solar system, at other solar systems which are outside and very close by within the galaxy. So this line is the frost line, as we know. So after the habitable zone, then we hit an area in a solar system which is called frost line. The frost line is a line or is a boundary where beyond that water will freeze up, as we have seen in the case of moons of Jupiter and Saturn, and all the planets which are outer planets, that they although these are gas giants, however the satellites which are present on these planet taking
revolving around these planets are all frozen up. So there is a lot of water on moon of Jupiter like Europa, but as you can see, it's kind of frozen up completely. And now scientists have already confirmed that there is a subterranean huge ocean, and on Europa there is so much water that it is almost 3 times the size of the Earth's ocean. Europa is slightly bigger than Moon. You can imagine that there is a huge ice crust on the surface which is protecting the interior from the outside radiation. So it's all frozen up, but inside there is liquid water. That means temperature may be higher, and there is a lot of water. That means there is more permutation combination possible. So now, considering this data that we are understanding about our own solar system, we may have to increase the size of the habitable zone, because there could be life found within the these planets which are even outside the frost line. So that is the latest understanding, and therefore we have to also look at other lines which may be important, because we know that there is liquid water in the habitable zone. Before that, there is no water at all because the temperatures are so high. After the frost line, there could be still chance of life coming up. If there is a similar situation happening elsewhere in any other solar system, we should be confident enough that there could be life on those moons of those gaseous giants. So the other area that we are looking at, we are increasing our horizon when we are trying to find possibility of life, is basically going beyond the frost line, and now we are looking at the soot line. Soot line is the line at which the carbon freezes. So if there is ocean, if there is an ocean protected by ice crust, but if there is a lot of carbon, the chances are we will be able to find life on those planets. So this is something which is now being worked upon. We are now looking at increasing the search criteria, and we are now looking at the soot line. Soot line is the line of carbon. When you light a candle, you will see the carbon deposit around it, which is black in color. So that is called soot line. So in the solar system also there is a soot line. Beyond that, the carbon will be too much frozen. It will not be available for mixing around in the liquid ocean, etc., because the temperatures are too low. So this way we can extend our search criteria and not only look for water but also look for abundance of carbon, because if carbon is there, hydrogen is omnipresent. Carbon and hydrogen can merge together and can form life, ingredients of life. And we also know that nitrogen is also very abundant in the space, because if you see Pluto, which is so far off from the sun, but it is entirely made of liquid frozen nitrogen. So nitrogen, if it is available so far off in our solar system, it would be abundant in our solar system also. So we have determined that we have to extend our criteria, search criteria, and now within our solar systems, we have identified that these are the bodies which have liquid water on their surface. Now Earth has a liquid water on the surface itself. No need for extra protection. However, if you go beyond Jupiter and go beyond Mars, if you look at Mars itself, Mars mean temperature is minus 50, minus 60 at the equator. So when you look at Mars, the temperatures are already very low. But if you go beyond that, then there is a huge crust, icy crust, which is there. And after the icy crust, there is an ocean. And because the temperature is not that low that the carbon completely freezes up. So if there is liquid water, there is carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen, the possibility is that these oceans may have life. So a lot of research is being done at this point in time, and we know that the Clipper mission has been planned for study the exterior planets and their satellites to see if this could be life. Because if we find life within our solar system, it's going to be exciting, very exciting, because there will be
not only one chance of life coming alive on a planet called Earth, but there could be two chances or three chances where, independent of Earth system, life could have evolved within the subterranean oceans on those satellites of the gaseous giants, where there is liquid water and conditions suitable for life to kickstart and also thrive. So this kind of information will be very useful for us to look at other exoplanets where there are similar conditions. And so far we should not only look at the habitable zone, we should also increase our horizon of basically identifying if there are soot lines in that solar system where there could be possibility of similar conditions like our solar system. For example, this is a artistic depiction of the cryovolcanoes. Now these cryovolcanoes have been studied by our Galileo probe when it was visiting Jupiter, and organic compounds have been found in this steam. Now when we say cryovolcanoes, these are the volcanoes which are basically coming out from the frozen ice. So their ecology or their geology is completely determined by the temperature variation within ice itself, and there is a subterranean ocean which actually shoots out from this cryovolcano without converting into steam. So it does not require too much temperature to kickstart the cryovolcanoes. These cryovolcanoes have the fumes of these volcanoes have been studied by Galileo, and it has confirmed that this steam or this fume contains the biological compounds. More research is required, but if this is happening after 4.5 billion years within our solar system, why it should not happen on other exoplanets? So I think that's a good enough information for us to look and increase our horizon when we are looking for life. So far scientists have confirmed that there could be 17 exoplanets which could harbor life. Some are super Earth, which is like many times bigger than Earth, rocky planets. Some are smaller, but these are some of the very strong contenders, which is WASP 6b, Kepler 186f, and others, which are very, very strong candidate for having liquid ocean and possible life, because if there is water, there could be possibility of life being existing on these exoplanets. So it's very exciting. Today's study is very exciting. We should look at how the life would be on other planets, what are the conditions for life to exist, and we should actually extend our horizon from not only looking at the liquid water, but also extend our horizon and look at the conditions where there is liquid water, not on the surface but in the subterranean ocean, where there could be a different kind of life, different kind of conditions under which the life can evolve. So friends, this is a science topic today. I will take a very short break, come back in the business tips section. Don't go anywhere, returning after a very short break.
Welcome back, friends, and this is a business section, and today we are discussing about the important tips what you could do during this season, which is not going to basically give any business output for your company, because holiday season has started, festival season is over. People had invested and purchased items during the festival season, and but now they are not buying because they are now enjoying themselves. They are out there on holidays. So let us look at what are the what we should do in this slowdown period, especially for the business. And one of the things that you could do is in this period is analyze what were the success, failures for your company. Data analysis, this is something that you should do in this slow period, at least for from now December last week till third week of January. There is going to be extremely slow business, no deadlines, very little leads you will get. And when you look at your business, you could probably do something internally. I mean, look at the employee motivation activities yourself, and some of your employees would also have taken vacation. But I think this is, if you are the CEO of a company, this is the time to look at the data. What has happened in past year, which product your customers liked, which product did not do well, what are the trends. So this is a time which you can utilize next 2 to 3 weeks in performing a lot of data analytics for your organization, which will actually prepare you for the next year, and you can come out with killer campaigns to increase revenue in 2024. So what you should do is something that we will share with you. There are certain ideas. The first idea is basically, when you look at your data, see who basically purchased the products from you during the festival season and why. What was the demography of those offerings? What was the offerings? What were the segment? What you did right? So there is an opportunity to understand a lot of this data for you right now, because if your product is not doing well during the festival season, you have to also look at the competition database and see if that product is not doing well only for you, or it has not done well generally in the market. So if it is not done generally in the market, the chances are that this product is not in demand, so you can discontinue. So this kind of analysis will give you information that what are the product or services that you would like to launch next year to stay relevant. If, however, if you find that this product specifically for you has not worked, but generally your competitors were able to push that, identify the clients and bought from them. So essentially, a particular product has not generated revenue for you, but for your competitor it did. Similar product in the market really worked. So then you have to see what actually went wrong, how you position it. Is it related to the pitch that you made? Maybe the product is still in demand or services are still in demand. However, because of some wrong strategy, you could not capitalize in 2023. So you need to think through and look at the what you could do in order to design the next campaign for a product. So you cannot you should not be looking at discarding the product, but you should be now making sure that you are doing a course correction for relaunching this product next year. Another data point that you have to look at is if there are any leaks in your pipeline. Leaks in the pipeline are essentially the points where you have got a lead, but that lead was not worked upon, and that could cause an opportunity loss for you. So if there are you have been able to create a good funnel, you have been able to generate a lot of leads for your company. However, you
see that the percentage of conversion is not at the industry standard compared to the amount of lead you got. So you need to basically go back to the lead generation database and see what is the kind of lead. Maybe your the lead classification is wrong, maybe something has gone wrong basically. So you have to see that what is going wrong and how you can fix that information. So that your conversion rate can go high, or if the leads are good enough, there was a need, the client had revenue, still the client did not buy, and if there are many instances of such incidents, then obviously there is something going wrong in your system, and this is a time, because this is a slowdown right now. You're not actually spending a lot of time in doing any new business, so this is a time to reflect, see if there are any leaks in your pipeline, see if you can fix some of the data points, see if you can improve the systematic gaps in your funnel process, etc. If you have identified that it could be human error, so you can fix those human error, plan for training, orientation, some sort of orientation plan for your employees, so that in 2024 you don't have this instance where there is an opportunity on the table, there are leads coming into the system but not converting, which is a loss again for your company. So I think this is a time to look at this point and fix those gaps in your business. The other thing is look at the data analytics about the customer behavior. And this is the very, very important data point. In fact, if you look at the large corporation, they use this very, very effectively. It's also known as predictive data. This is also known as predictive data. So even your business is generating, even though you're a small business, your business is also generating data which can be used for predictability of different initiatives that you want to take for next year. So you should look at the data, understand what customer wants, and accordingly plan your next year's campaign. So this is a very important activity, because if you keep doing the same thing year on year on year, every year the same thing, then where is the growth, where is the innovation, where are the new ideas? And we know that the customer is king. So if customer demands something, customer is expecting something, and if you don't provide that, then obviously in your company, customer is not the king. So make sure, look at the customer demand, make a predictive analytics about your business. Make sure that for next year you don't commit a mistake of analyzing where the customers are going to come from, how the customer behavior is, what is the customer needs, and accordingly basically make sure that your strategy for 2024 is planned based on the data that your company has generated in 2023. And therefore this is something which is very important, which you could do within this slow period. And the future looks bright. The future can be made bright if you have not one strategy but multiple strategies going. And now last year you did not get time to implement multiple strategies, because if you have multiple strategies, it's also difficult to manage multiple strategies. However, if your company has to cater to a large segment in the market, then one strategy may not work for the entire segment. So we have to ensure that you, based on your limitations and your opportunities, you should actually make one or two very strong strategy which you can follow, and you can then maximize the amount of customers that your company can win next year. So you should not have only one way of approaching the client. You could have more than one way. The limit is endless, but then more than one way, how much you can manage. And today, we are not looking at the manual process for even managing a funnel. Everything is automated. So once you have the clarity of what couple of strategies, one or two or more, that you want to go ahead in 2024 to basically kickstart the year,
in a much more positive results for your organization. This is a time, this is a slow period. You can think about implementing those strategies, whatever works for you, automating them, so that you do not want to look at a lot of human management intervention there, and look at implementing these business dashboards, so that you don't spend time in monitoring what is going on, but this is a time to implement those. Think through what strategy works for you. Then once you finalize the strategy, make sure that you automate that. Make sure that since you are the leader or a CEO of the company, make sure that those results are always visible to you in real time in some sort of a dashboard. This can be done very easily at this point in time, and therefore you should spend your holiday season, which is most of your employees are holidaying at this point in time, and not many customers are approaching you because even your customers are holidaying, and there is a slowdown in the market. So make sure that you utilize this time to study or plan strategies, pipeline, funnel, product strategies, employee training, all of this aspect within this next 2 to 3 weeks, so that once the holiday season is over, the vacations are over, you are ready to kickstart 2024. And the timing that I would like to say is by third week of January, you should be ready to kickstart your next year, and by February you should be in full swing. So friends, this is all I wanted to share with you is in the business tips section. This is a business tip for today. I will meet you tomorrow again with the new business tip, but for today I will be taking a very short break, coming back with the top company section, top company in your state. Don't go anywhere. I will be taking a leave only for few seconds. Welcome back, friends. This is a program which is known as identifying the top companies in your state. And right now we are doing research on the state of Haryana. And if you're living in the state of Haryana, do you know the top companies in your state? If not, then you have reached the right place, because we actually do a lot of research and provide you information about the top companies in your state. And today we are going to discuss about Haryana and what is the top company in which segment. This is in the chemical. So in the chemical business, chemical research and development and chemical business, which is the top company in the state of Haryana, that we will discuss today. And this company, which is having largest presence in the state of Haryana, it's called Hindustan Gums and Chemicals Limited, HGCL, in short HG. So Hindustan Gums is a fairly large company in the segment, even though if you look at the turnover of this company, it may not be comparable to a bank or automobile, because chemical is a small segment. So within the chemical segment, Hindustan Gums is the largest player in the state of Haryana. There could be larger companies in other state, but in Haryana they are the largest. What makes them large in the state of Haryana, we will actually discuss in terms of any strategies that they are employing, etc. I will present all of this to you. And Hindustan Gums is actually present in the state of Haryana. Their manufacturing plants are in the state of Haryana.
Therefore they are the largest because they are employing a lot of people. Their capital investment is also in the state of Haryana, and they are contributing to the economy of state of Haryana, because if their manufacturing is happening in the state of Haryana, that means their raw material, their produced goods will also be consumed largely in the state of Haryana. Even though they may be supplying the chemicals to other manufacturers as a raw material, that could also be a possibility, because there could be a chance where these gums which they are producing, or the chemicals they are producing, their biggest customer is actually food and beverages industry. The food and beverages industry is a huge industry, because they're, in a country like India, there are a lot of people. The F&B sector is huge. A lot of people buying a lot of items when it comes to food. Therefore, companies like Hindustan Gums is also involved in producing certain base items which are used on daily basis in F&B, and as the name suggests, it's the gum or glue. They also produce a lot of these chewing gum based products, and also glues are also a huge market segment when it comes to chemical. And when we look at the chemical, the first thing comes to our mind is some sort of acid, but then the chemical companies have to stay viable. They have to look at their demand and supply also. Therefore, the companies like Hindustan Gums produce something which is of mass consumption. So things like glues and things like gelatin based products for F&B business, that is their core business. And therefore, if the core their customers, the clienteles are doing very well, and it's a huge segment, companies like Hindustan Gums are sitting in a very, very sweet spot, where they have a ready business of whatever items they are producing, which is in the area of glues and gums, because the consumption is immense in the market. So that is the point number one, that the product strategy of Hindustan Glue or Gum is perfect. They are producing things which are required by the F&B and also pharmaceutical textile industry to basically take their market further. So essentially, Hindustan Gum type of companies or any other chemical company becomes a company which supports the other sectors. Therefore, it is important to basically look at the Hindustan Gum, which is headquartered in Haryana. They have their manufacturing plant, and they are the largest player in chemical sector within the state of Haryana. Now, having spoken about the business, the nature of business of Hindustan Gums, we have to also understand that in the area of chemical, there is a lot of R&D involved, because whatever you're doing today may not have may not be true forever. There could be more efficient chemicals, there could be much more friendly chemicals, there could be there is a concern about the carbon emission and environment control. So maybe the chemical that we are producing is affecting the environment. So there is a research requirement for this company, so that they can come out and refine the output of their end products. So these are certain things which the companies is indulging in, and because of this, the R&D is very important. So when we talk about R&D, especially in the chemical, the skills required by Hindustan Gums are very special. They are not the scientists or engineers, they are the chemical engineers. Basically, they have to understand the molecular behavior of various elements like hydrogen, carbon, stuff like that, nitrogen, gold, silver, iron. They have to understand what is the chemical composition, how they react chemically, and using these knowledge, what they can do to generate new chemicals, new things which may be more user environment friendly, customer friendly, etc. And also moving along with the time, because right now we know that there are gums, but tomorrow there could be polymers which may be required. So if
in future, if the polymers are in great demand and the companies like Hindustan Gums are still producing gums and adhesives, then they will be out of business in future. So companies, chemical companies, have to constantly invest in their R&D division, so that they are always future ready and they can switch gear as and when the opportunity arrives. So this is an important segment of chemical companies, and therefore if you are a good chemical engineer or good scientist with understanding of elements, then this is something which you should look at for your career. And since if you are based in Haryana, then this is a good opportunity for you to look at. What are the other items that makes them tick in the state of Haryana? The cutting edge part is something that we should talk about, that whenever they actually produce any chemicals which are used by other sectors, they have to ensure that the shipment and the production process and all of that is adhered to as per the best environment friendly policies, and therefore the cutting edge part comes very, very important. Now the HGCL is basically providing lot of collaboration for small businesses. So since they are a large company in the chemical, and if you are basically a small businessman, you are producing some raw products for Hindustan Gums, and if you're based in Haryana, then you can collaborate with HGCL and become their partner. They are very, very open. They thrive on a community. They have been able to build a community of suppliers and also raw material suppliers and also distributors, because that is an important part. Supply chain is an important part of this kind of manufacturing, large scale manufacturing. So they are working towards it. They are actually affecting the community around their own core business. They are offering employment to skilled labor in Haryana. They are generating revenue for the state. They are also providing a good ecosystem for their suppliers and sort of a community. So I think this the effect of such a company is immense on the state of Haryana, because obviously they are doing manufacturing out of Haryana. So these are certain things which you should keep in mind when it comes to HGCL, Hindustan Gums Limited, and it is contributing a lot to the state of Haryana. Therefore today I brought in front of you the top companies in the chemical sector in the state of Haryana. So if you are in the chemical business, you should look at Hindustan Gums to set up some sort of arrangement for your growth of your business. Or if you're basically a skilled, educated person in the area of chemicals, you should look at HGCL in Haryana to kickstart your career. Hopefully I am able to give you information which is relevant, and I am able to inspire you, especially for this segment which is chemical. And also if you are expert in this area, then you should not look away as an opportunity Hindustan Gums offer you. So friends, thanks for watching me online. I will meet you again tomorrow with another company, top company in your state. And right now I'll take a very short break, and will join you back in the next section. Don't go anywhere. It's a very short break.
Good morning, everybody. How are you doing today? And today I am taking up a very important aspect of Vaastu, which is study room. Everybody wants their children to be more profound, to be intelligent, and the Vaastu principles can help in attaining these kind of good points when we are talking about children development, children study. So let's find out that where you should actually make the study room for your children. So best direction for study room in the house for children is that you can install this study room in north side or east side. And if you north and east is not available, then of course there is one possibility where you can make your study room for your children in northeast side. Now when we have study room, so always make sure that there is no clutter when we are talking about study room for the children. Now when we are placing the table, so the direction of the table is also very important because when we are placing the table, then you should make sure that it should not be in round or oval shape. Though it looks really sound really good, but it advisable that don't put any kind of round or oval table in the study room for the children. You should take up especially wooden table, and it should also be very crisp in terms of square. You can take a square table, you can take a rectangle table, and when you are taking a rectangle table, that make sure that the measurement is 1:2. That will help you in actually more concentration, more well-being of children while studying. So, and everybody look into a kind of concentration for children study, because that concentration and positive energy can only actually make children more profound, more intelligent. Now coming back to few aspect what you should not do. So what you should not do and what are those measures which you have to take in consideration for the study tables. First of all, the table should not be under any beam. It should not be in front of the window or maybe connecting to the wall of the window. So that is also not really good. And you should also make sure that the facing of the children should not be towards the blank wall. At the same time, I will also want to tell you the facing of the children while studying, that will should be either in the east direction or north direction, because that will enhance the academic performance, memories. And in case if you are also if you're also making a few changes in the study room, you want to also place a bed, then also make sure that there is no beam in front of the bed also, and the head of the children should also be in towards south or towards north or northeast. That will really help it. And as far as the window is concerned, please make sure the window should be either in north side or northeast side. And now definitely what are those things you should be placing on the study table? So for study table, of course, lamp is very essential aspect of the study table. So you can keep the lamp in southeast area of the table. At the same time, if you are putting a small statue of goddess
Saraswati, that will also be part of decoration, as well as that will clear the negativity and kind of creating a well-being for the student. Make sure that every day student should put at least one flower in front of the idol of Saraswati, if you are putting a Saraswati idol on the study table. So these are few aspects, and one thing which I want to actually tell you, there are many study rooms where people, where parents, they want to put all the things in one place, like toys. So that's fine if you're putting toys, but make sure the most of the animal toys should be first students or children should play, and then they should be placed outside of the study room. That will really help. Otherwise, what happens if you are putting a lot of toys which are like animal basically toys, so that add to the to an indiscipline in the children. Like animals, they are more kind of creating fuss at the time. So make sure when you are putting toys, and if they have more of animal toys, so definitely they can play inside the study room, but make sure when you are putting away these toys, they should be outside of the room of study room. So and these are few aspects, and at the same time, I few points which I have discussed with you. I just want to make sure, very very important tip, that please make sure that the study room of children should be clutter free. And when you are painting something, you are giving any colors to the study room, that make sure all the pastel, they should be on a pastel colors. It could be a warm white, it could be a light yellow. That will really help. That will enhance the concentration and calmness in children. So that is something really good. Kind of color combination, white is also good. And make sure that all the table or the racks which you are putting in the study room, they should be properly planned, and they should be clean. Don't try to keep the shoes in the study room. That is also one thing. So these are a few points which I wanted to discuss today, and I hope you will take advantage about these few tips for study table, because children is a part of our life, and everybody, me and you, everybody wants to actually give more and want them children to be more successful, more good human beings. So these are few points which I am discussing with you regarding the Vaastu of the study room. So I'll be meeting again in the next topic about the Vaastu Shastra in your house, how to utilize these Vaastu tips in the house, in the factories, in the office place. So till then, see you, take care. So I will be coming back tomorrow. Bye bye.
Hello, good morning. And today, in this section of history, I am sharing a very personality of a very profound queen, and her name is Naiki Devi. Many people are not aware about the profile of Naiki Devi, but here I just want to tell you that the contribution of Naiki Devi is immense when we are talking about stopping the Turks, the Gauris. So this is a very, very what we say strategic person, a ruler of Gujarat, and at the same time the kind of war she has done with Muhammad Gauri, the kind of war she has waged, and there is something very, very remarkable about Naiki Devi. Now Naiki Devi basically belonged to actually Goa, but she is married to some say Solanki, some say Chalukya, and she was married to Gujarat. In Gujarat, but later on, what happens? The husband, who was a ruler at that point of time of Gujarat, he was killed by his own security guard, and at that point of time, the son of Naiki Devi was very small, and so she has to take the reins of Gujarat, and that was a very, very period where there are a lot of people from outside were attacking Gujarat. They want to come and they are waging wars through Multan. And one of the prominent person was Muhammad Gauri. And when we are talking about Muhammad Gauri, everybody knows that he was defeated by Prithviraj Chauhan approximately 15 times. But when I'm talking about to Naiki Devi, she is the first person to defeat Muhammad Gauri, and she is the first person to stop Muhammad Gauri coming to India, and these kind of information very few people know. So and she has safeguarded these border, and so much so that due to Naiki Devi, at one point of time Muhammad Gauri has to change the path to enter India. So Naiki Devi was, as everybody knows, especially in Gujarat, we have many people know about this profile of a very dynamic, very courageous queen of India. So we'll be discussing about this queen. Now, Naiki Devi is actually, when we are talking, Naiki Devi took the charge of kingdom, executed military affairs after being crowned king, and she was looking after taking care of that crown. And or at that point of time, Gauri had already has come to Afghanistan. He has also taken up Multan, and but later at this point of time, Naiki Devi requested the assistance of nearby kings like Kirtipal of Jalore, and there are many Abuda from other kingly places, and they all actually contributed or said yes to Naiki Devi to stop Muhammad Gauri. And so the preparation was done by Naiki Devi. The strategy is also being done by Naiki Devi, and she has taken a terrain which is rocky and which was near Mount Abu. So here things have was really very interesting. And when we are talking about Naiki Devi, everybody should understand and should know about this profound personality from the past, from the history. And the Gauris and all Turks, they were the warrior who not only want to control the land but also want to establish Islamic law. And all these Turkish commanders, they wanted to propagate Islam in all
all the territories which they want to win. So as everybody knows that Muhammad Gauri was little deceitful, and he used to disown all the kings who were defeated by him. Now coming back to Naiki Devi and her strategy. Naiki Devi has defeated all the Turk soldiers and leaving behind only few of them with Muhammad Gauri, and so much so that Muhammad Gauri has to leave at that point of time, leave the battleground. He has to run from the battleground, and she fought really, really very, very profoundly. You know that at that point of time, people used to not only use horses, but they also used elephant, and you can actually visualize the kind of profile when Naiki Devi with her son tied on the back, and she is having a khadak in her hand and riding an elephant. That whole scene was so mesmerizing and was creating terror for the enemy enemy, that means Muhammad Gauri. So this is something which is very, very profound. It is actually, so it is well recorded in the history books. So this is something, a personality which I want to share with you, and I want everybody to celebrate the profile. They should know about the contribution of Naiki Devi. And this is how this is the first defeat by the hand of a female he witnessed, Muhammad Gauri witnessed in India. So we all talk about the Prithviraj Chauhan defeating Muhammad Gauri, but somehow many people don't know that this is Naiki Devi who has actually first time defeated Muhammad Gauri, and it was such a blow to his dignity, and he never tried to take over Gujarat after that. So this is a very interesting profile from the history I wanted to share with you. And so I will be meeting again with a new profile, new historical incident, new historical personality tomorrow. Till then, please do find time to read and celebrate this personality by the name of Naiki Devi of Gujarat. So all the best. See you tomorrow. Bye-bye.
Good morning. I'm here with my tarot reading session, and I can see many people who have already joined. They have put forward their questions. So before I go forward, let me do the birthday reading first. And we can see Tanya, Zanib Zabeen, Fahmida, Jyoti Kumari, Rafia Sana, Vikram. So welcome you all to this live streaming. And let's begin with birthday reading. Let's find out. This is 1, this is 2, and this is 3. Let's find out what is stored for all birthday girls and birthday boys today, and what is the guidance which is being given to you. Okay, for birthday girls and birthday boys, things are really not very positive, and there is a money loss which is being indicated, and as well as it is also indicated that you may witness many lies, maybe, or maybe some people may commit or promise and they will not fulfill the promises. So there's the loss which is being indicated today. And even if you do hard work, and even if you actually put your heart and soul, the success will be little delayed, but that doesn't mean that you stop working on your goals. It could be your personal, professional, financial goal, but the success, any kind of success which you are looking at, will be delayed today, and you have to bear with that. There is a loss of friendship, there is a loss of relationship, there's a loss of finances that is definitely is visible. But in this hour of sorrow, or is hour of where you are not successful, friendship can bloom. That is also being indicated. So now the whole crux of this reading is that please continue what you are doing and continue working hard persistently, so that when the time comes, you are ready and you have those kind of pillars where you can you have already worked, and those kind of platform or a foundation can bring you success instantly. But today definitely things are a bit challenging. Now let's find out what angels are actually asking you to do. Angels are also actually taking you, just go slow. Whatever success you want, whatever happiness you want, will come only in near future, not today, not tomorrow. So what you can do best is that be positive and keep smiling. That is one thing which can iron the challenges which you will be facing very shortly. So this is it. All the best. May God bless you all. But once again, happy birthday. Do not forget to enjoy your birthday. Have a party, enjoy things, make the moments positive. All the best. Let me now go to my one card reading. Now we have Tanya Khajuria, card number 1. तानिया जी, आज आपके लिए चैलेंजेस हैं, आज आपके लिए सक्सेस नहीं है तानिया जी, और हो सकता है जो जिसकी आस आपने लगाई थी, जो आपके लिए हो जाएगा वो ही ख़त्म हो जाए आपके लिए. हो सकता है आपके फ्रेंड्स आज आपसे बात ना करें, तो आज एक नेगेटिविटी दिख रही है तानिया जी. एंड कार्ड नाउ युवराज की फीलिंग दोनों ही बहुत ही को रिलेटेड है अगर देखा जाए तानिया जी. वे युवराज इज लिविंग, एंड वाइल दिस you and Yuvraj has a lot of sorrowful feeling for you, Tanya ji. So it's not a really good indication. It's a no card as far as your general reading is concerned. In consideration with these 3 cards, now the current situation is really no, it's not positive. But if you pursue the positivity, and if you pursue जैसे बोलते हैं आशा, जिसकी आशा है आपको, और जो आशा के साथ, होप के साथ अगर आप जो भी काम करेंगी तानिया जी, तब जाके आपके लिए जनरल रीडिंग, जनरल गाइडेंस ये है कि आप
आप को पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस मिलेगी। सो दिस इज इट आपके लिए। So this is it, Tanya Khajuria. Tanya, okay, then we have Rafia Sana, card number 2. साजिद की फीलिंग मेरे लिए, सानिया जी, साजिद की फीलिंग डेफिनेटली पॉजिटिव है आपके लिए रफ़िया सना, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी पर्सनालिटी को इस रिलेशन के लिए थोड़ा सा एनहांस करें, थोड़ा सा वोकल हो जाइए रफ़िया जी, दैट विल रियली रियली हेल्प यू। थोड़ा स्किल डेवलपमेंट, थोड़ा सा कुछ सीखिए। लर्निंग का एक्चुअली आपके लिए कार्ड है, चाहे वो किसी तरह की भी लर्निंग क्यों ना हो। विक्रम ने पूछा है 1 कार्ड फॉर मी। 1 कार्ड आपके लिए आज बहुत ही अच्छा आ रहा है विक्रम जी। आज तो जादू की छड़ी आपके पास ही है, आप जो चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे, बशर्ते आप उसमें हार्ट एंड सोल के साथ काम करें। आप जो भी आज अच्छे से काम करेंगे विक्रम जी, उसमें आपको डेफिनेटली पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, आप अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। सो ऑल द बेस्ट विक्रम जी। चांदनी जी, जनरल रीडिंग कार्ड नंबर 1। जनरल रीडिंग में आपके लिए पॉजिटिविटी थोड़ी कम है चांदनी जी, लेकिन जो आप काम कर रही हैं वो डेफिनेटली आप करते रहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको अभी सक्सेस नहीं मिल रही है तो फिर आगे भी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। जो भी काम उसमें आप लगे रहिए और आगे जाके आपके लिए रास्ते खुलेंगे सक्सेस के। एंड डेफिनेटली हेलो गुड मॉर्निंग चांदनी, आपको भी पूरा दिन आपका शुभ रहे, अच्छा रहे। ऋषु गुड्डू के साथ मेरा रिलेशन, गुड्डू के साथ मेरा रिलेशन अलग कैसे चलेगा, मतलब सिर्फ आगे कैसे चलेगा, मतलब आगे कैसे चलेगा, ये है ना आपके रिलेशन। देखिए अभी जो गुड्डू की मनस्थिति है ना वो बहुत अच्छी नहीं है, बोरिंग लग रहा है, वो खुद भी बहुत डिससेटिस्फाइड है। और जब व्यक्ति डिससेटिस्फाइड होता है ना ऋषु तो कुछ और करने का स्कोप उसके पास होता ही नहीं है। तो ये लो कार्ड है आपके लिए। और अगर ज़्यादा डीप आपको रीडिंग चाहिए ऋषु तो आप मेंबर बन जाइए या आप फिर सुपर चैट यूज़ कर लीजिए। ओके, चित्रा पूछ रही हैं विल आई गेट स्टक मनी इन 2024। चित्रा जी, व्हाई डोंट यू बिकम ए मेंबर। मैंने आपको पहले भी कल भी शायद बताया था कि 2024 की सारी रीडिंग हम सैटरडेज को करेंगे और मेंबर्स के लिए होगी। तो चित्रा जी मेंबर्स बन जाइए। इसके अलावा भी बहुत कुछ आप पूछ सकती हैं और वो जो भी मेंबर्स हैं वो उनके लिए एब्सोल्युटली फ्री है और आप n नंबर्स ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो बिकम ए मेंबर फॉर 2024। एंड दूसरी बात यह है कि आपको ज्वाइन करना है हमारा लकी ड्रॉ ऑफर जो चल रहा है। करना क्या है कि आपको एक्सक्लेमेशन और ज्वाइन टाइप करना है और एंटर करके बस यू आर देयर इन दिस लकी ड्रॉ। तो आप फटाफट ज्वाइन कीजिए आज का लकी ड्रॉ, और जो भी लकी होगा, जो भी विन करेगा, ये सिस्टम जनरेटेड ड्रॉ है, तो जो भी विन करेगा उसको वर्थ ऑफ 1000 रुपीज़ एंजल्स रीडिंग एब्सोल्युटली फ्री दी जाएगी। सो ऑल द बेस्ट, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। करना यह है एक्सक्लेमेशन साइन और टाइप करना है ज्वाइन। बिल्कुल भी देर मत कीजिए। ओके, सो चित्रा ने ज्वाइन कर लिया है डेफिनेटली। आगे हम बढ़ते हैं 1 कार्ड रीडिंग के लिए। मैं आप सभी को बता देती हूँ 1 कार्ड रीडिंग के अलावा आप सुपर चैट यूज़ कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं अभी के अभी। और डेफिनेटली आप जैसे ही मेंबर बनेंगे वैसे ही आप
बहुत सारे डीप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। इसके बाद है ऋषु। आगे कैसे चलेगा आप पूछ रहे ना, आगे जो भी चलेगा उसके लिए तो डीप रीडिंग करनी होगी ना। वन कार्ड में ऋषु नहीं हो पाएगा ना वन कार्ड, तो आप या तो सुपर चैट यूज कीजिए फटाफट, या आप मेंबर बन जाइए। दोनों ही ऑप्शंस आपके पास खुले हुए हैं, पार्टिसिपेट कर लीजिए अगर आप लकी हैं। एक्सक्लेमेशन साइन और ज्वाइन ऋषु करके अगर आप लकी होंगे आज के ड्रॉ में, तो आप वहाँ पर आप एंजल्स रीडिंग के द्वारा यही प्रश्न पूछ सकते हैं। सो 3 ऑप्शंस हैं ऑलरेडी आपके पास। देन चांदनी, अंशुल की फीलिंग फॉर मी कार्ड नंबर 1 बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, बहुत क्योस है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो आज कोई भी नया काम, नई चीज़ ना करें इस अंशुल के साथ रिलेशनशिप को लेकर। पंपा मैती, प्रबल सरकार ने उनका जो डेट ऑफ बर्थ दिया है वो क्या राइट है? लेट्स फाइंड आउट। एक्चुअली आपको इसके लिए डिवाइन रीडिंग लेना चाहिए। कार्ड नंबर 3 बिल्कुल यस है आपके लिए, कार्ड यस कार्ड है, सो डोंट यू वरी। पंपा मैती। चांदनी, मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा, ये पूछ रही हैं चांदनी। कार्ड नंबर 2 देखिए यस का कार्ड है पहली बात, लेकिन इसमें थोड़ा डिले भी दिख रहा है। सो ये इसमें आपको ये समझ के चलना होगा कि नेगेटिविटी तो नहीं है, लेकिन देर आपको लग सकती है। सो दिस इज इट। सो ऋषु क्या बोल रहे हैं कि मेंबर बनने के लिए क्या करूं? तो उसके लिए क्या करना है कि आप नीचे जाएंगे ना, आपके वहाँ पे अगर आप मोबाइल पर हैं तो वहाँ पे ज्वाइन बटन है, तो वहाँ पे आप बस ज्वाइन कर लीजिए। वो जो भी विंडो आएगी उनको आप फॉलो करते जाइए, आप ज्वाइन हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। पहली बार जो मेंबर हैं उनको प्रायोरिटी रिस्पांस मिलता है, दैट इज़ 1। सेकंड है कि आपके सैटरडे को एब्सोल्युटली फ्री मेंबर्स की रीडिंग की जाएगी फॉर 2024, और इसके अलावा आप कितने भी डीप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल ऑप्शन है सभी कॉलर्स के लिए। ओके, तो फाइनली आप पूछ ही रही हैं चित्रा जी, विल यू गेट स्टक मनी? तो यस हो सकता है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा चित्रा जी, क्योंकि जो आपके पैसे देने वाले हैं उनके दिल में उतनी ज़्यादा क्लैरिटी जो है अभी आज के दिन तो नहीं दिख रही है। लेट्स फाइंड आउट कि आगे आने वाले समय में वो हो जाएगी कि नहीं। पूजा से लव करते हैं, पूजा से लव करते हैं, ये पूछ रही हैं आप। कार्ड नंबर 2 बिल्कुल बहुत ज़्यादा करते हैं एक्चुअली चांदनी जी, एंड बहुत ही पॉजिटिव है। इतनी पॉजिटिव है कि अगर वो चाहें, जो मतलब अगर चाहें तो वो डेफिनेटली एक सेरेमनी, मैरिज, ये सारी चीज़ें पर काम किया जा सकता है इस रिलेशन को लेकर चांदनी जी। सो दिस इज़ इट। शिल्पा, जनरल रीडिंग, कार्ड नंबर 2 पूछ रही हैं शिल्पा जी। जनरल रीडिंग आपके लिए पॉजिटिव है, यस कार्ड है। चीज़ें इमोशनल हैं, पैशन दिख रहा है आप के लिए जो भी चीज़ों को आपने देखा है। सो इट्स ए यस कार्ड। Pampa Mathy is saying thank you. You are welcome, Pampa. God bless. हाँ, सो मैं आपको बता दूं, आपके प्रश्नों का मुझे इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा कल जो स्ट्रीमिंग है वो 10 बजे शुरू होता है। उसमें आप अगर बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, चांदनी जी एक्सक्लेमेशन साइन आपने नहीं किया है, एक्सक्लेमेशन साइन और फिर जॉइन दोनों को टाइप करना है। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि
10 बजे हमारा स्ट्रीमिंग शुरू होता है। उसमें कई सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करते हैं। तो बिजनेस टिप्स हैं अगर आप बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, और कंपनीज की डिटेल्स हैं आपके स्टेट के अंदर, टॉप कंपनीज, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं टॉप कंपनीज में, तो इससे अच्छा सेगमेंट आपके लिए हो ही नहीं सकता है। और इसके अलावा अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो आपके लिए हिस्ट्री का सब्जेक्ट है आपके पास, और साइंस शो है जिसमें साइंस के बारे में बात की जाती है। इसके अलावा एक माइंड जिम का प्रोग्राम है जो इसके बाद हम करेंगे, और उसमें आप आंसर्स दे सकते हैं। यू कैन ट्राई, आपकी प्रिपरेशन कॉम्पिटिशन्स के लिए कितनी है, यू कैन आंसर दीज क्वेश्चन जो क्विज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं अपने वर्क प्लेस में, अपने हाउस में, अपनी कंपनीज में, तो वास्तु का भी सेक्शन है जिसमें रेमेडीज बताई जाती हैं और डायरेक्शंस बताई जाती हैं वास्तु के हिसाब से, ताकि आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, मनी, सक्सेस सभी कुछ आए। सो ऑल द बेस्ट, प्लीज डू नॉट मिस ऑल दीज सेगमेंट्स। और अब हमारे बीच में हैं निशिता जकाती जो कि हमारी मेंबर हैं। तो पहले मैं उनका लिए क्यू बाईपास करूंगी और उनके लिए लव डेक से आज रीडिंग करूंगी। सो जस्ट वेट निशिता जी। दानिश, मेरे लिए क्या फील करते हैं, क्या वो मेरे पास वापस आएंगे? 2 प्रश्न हैं आपके। पहले फीलिंग्स क्या है दानिश जी, और थैंक्स फॉर बीइंग अवर मेंबर निशिता जकाती। आपको ये भी बता देती हूँ निशिता जी, डोंट फॉरगेट टू जॉइन ऑन सैटरडे, क्योंकि हम एब्सोल्युटली फ्री 2024 की रीडिंग सभी मेंबर्स के लिए कर रहे हैं ऑन सैटरडे। तो आपका जो प्रश्न है निशिता जी, दानिश मेरे लिए क्या फील करते हैं, पहला प्रश्न आपका ये है। तो मैं पता कर देती हूँ यहाँ पर जो ओके। सो पहला जो है कि बहुत कुछ जो फीलिंग है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नेगेटिव का इंडिकेशन आपके लिए दिया जा रहा है। लेकिन साथ में जो रिलेशन है उसकी जो रिलेशन का जो बेस है वो बहुत कुछ निशिता और दानिश के बीच का जो रिलेशन है बहुत कुछ एक्चुअली दानिश पर डिपेंड करता है। सो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि उनका विल पावर का बहुत बड़ा रोल है, किस तरह चीज़ों को वो आगे हैंडल करना चाहते हैं निशिता जी। तो ये डेफिनेटली जहाँ तक फीलिंग है ये यस की फीलिंग है दानिश। एटलीस्ट आज तो आपके लिए एक अच्छा मोमेंट का इंडिकेशन है, और ये ही इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड फ्रेंड, ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है, अ लविंग पर्सन। लेकिन कमिटमेंट में थोड़ा सा है और थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है जैसे कि शायद मुझे लगता है लास्ट टाइम आपने कहा था कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। बट यहाँ पर जहाँ तक फीलिंग की बात अगर की जाए तो ये आपके लिए आज तो पॉजिटिव आ रही है। और ये दूसरा कार्ड है जो भी फीलिंग्स और रिलेशनशिप के बारे में हम बता रहे हैं, तो इसके अंदर आपके लिए भी पॉजिटिविटी का इंडिकेशन है, क्योंकि आप अभी शायद कुछ ऐसे एफर्ट आपने लेटली कुछ किए हैं जो एंड ऑफ द प्रॉब्लम्स का इंडिकेशन आप के लिए हो रहा है। तो जो प्रॉब्लम्स आप अभी बहुत दिनों से फेस कर रही थी, तो ये वो समय आ चुका है कि एंड ऑफ द प्रॉब्लम्स के बारे में आप बात करें। और इसके लिए बैलेंसिंग और मॉडरेशन आप खुद भी कर सकती हैं, किसी फ्रेंड से करा सकती हैं। और आपके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी गाइडेंस भी दी जा रही है कि भाई आपको या तो खुद कीजिए, तो कभी कभी रिलेशन में हम खुद नहीं कर पाते, तो फाइंड अ पर्सन जो करेक्टली इस रिलेशन को इवैल्यूएट कर पाए और बैलेंस ला पाए, इंटरनली शायद आपको गाइड कर पाए। तो ये तो आपके पहले प्रश्न का आंसर है कि वो अब आपके पास वापस आएंगे कि नहीं, लेट्स फाइंड आउट। सो ये 3 कार्ड्स हैं फीलिंग के, और ये दूसरा कार्ड है कि आपके पाएंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली थोड़े चैलेंजेस आपके दिख रहे हैं। आपने बोला कि वो दानिश क्या वो मेरे पास आएंगे, तो उसमें कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं निशिता जी, और ये फैक्टर्स आपके लिए
कंफ्यूजन के फैक्टर्स एक्चुअली दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है आपके सेकंड क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं निशिता जी, इमेजिनरी होते हैं, समथिंग लाइक दैट। कई सारी चॉइसेस होती हैं जो दानिश शायद चॉइस ही नहीं कर पा रहे हैं, वो चॉइस करना चाहते हैं और उनके पास ऑप्शंस भी हैं। तो इसीलिए ऑप्शन भी है और कंफ्यूजन भी है, और इसलिए एक जो होता आपके पास वापस आएंगे उसका सिलेक्शन या उसका चॉइस अभी नहीं हो पा रहा है। तो ये नो कार्ड है कि वो आपके पास वापस आएंगे कि नहीं। सो ये कुछ है जो आपके लिए बताया जा रहा है। तो अभी क्रक्स ऑफ द गाइडेंस विल बी निशिता जी के प्लीज फाइंड द बैलेंस, दैट इज वन। सेकेंड के फीलिंग्स तो हैं, लेकिन उन फीलिंग्स को जनरेट करने के लिए थोड़ा मॉडरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक मॉडरेटर या तो आप खुद बनिए या आप किसी को ढूंढिए जो आपकी हेल्प कर सके। ये आज का गाइडेंस निकल कर आपके लिए आया है। सो निशिता जी, think about it and all the best. Thanks for being our esteemed member. Take care of yourself well. And do not forget to join on Saturday. अच्छा, चांदनी का, अब मैं वन कार्ड रीडिंग की तरफ आती हूँ। चांदनी, क्या पूजा किसी थर्ड पार्टी से बात करती है ए को बिना बताए? इसके लिए तो एक्चुअली ऑरिकल रीडिंग आपको लेनी चाहिए। इट नीड्स अ डीपर रीडिंग, डीपर कार्ड्स फॉर रीडिंग। चांदनी जी, करमपाल गुनदीप की फीलिंग, कार्ड नंबर 2, अच्छी फीलिंग्स हैं, यस कार्ड है, जेनरस है फीलिंग्स। तो आज बहुत कुछ आप कर सकते हैं। प्लीज गो एंड डू मीट गुनदीप, ऑल द बेस्ट। अजय की फीलिंग, कार्ड नंबर 1, ज्योति कुमारी बोल रही हैं, यस कार्ड है, लेकिन थोड़ा समझदारी से हैंडल करेंगी ना रिलेशन को ज्योति कुमारी, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ऑल द बेस्ट। क्या चंदन मुझे रीयूनियन के बारे में सोचते हैं, मतलब वो रीयूनियन चाहते हैं, इसके बारे में वो सोचते हैं कि नहीं? मानसी जी ये पूछ रही हैं। हाँ जी, सोचते तो हैं लेकिन करते नहीं है। प्रॉब्लम ये है मानसी जी, क्योंकि चाहते हैं, सोचते हैं, बट सोचने से तो नहीं होता ना, करना भी होता है ना कभी कभी मानसी जी। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है। और आपके प्रश्न का बिल्कुल अगर मैं जवाब बोलूँगी या रीडिंग आपको बताऊँगी तो यस है आपके लिए, वो सोचते हैं। लेकिन क्या एक्शन करने के लिए हो सकता है कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन है चंदन के सामने, या हो सकता है आपके सामने है। तो टाइम आ गया है कि अगर सीरियसली इस रिलेशन को बनाना चाहते हैं तो उस पर काम करें। टेक ए लीप ऑफ फेथ फॉर दिस रिलेशनशिप, ये चंदन को चाहिए। फ्रेंडशिप है आपकी अच्छी, अच्छा, आई थिंक वर्किंग एंड टॉकिंग रिलेशनशिप भी दिख रहा है जो कि अच्छा है। बट अगर पैशनेट रिलेशन की बात करें सो उसके लिए तो थोड़ा सा चैलेंज तो लेना ही पड़ेगा चंदन को आगे करके, और रीयूनियन के बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा, जो शायद अभी नहीं उतना सोच रहे हैं। चाहते तो हैं बट कर नहीं रहे हैं, ऐसा प्रॉब्लम है कुछ। और आप कह रही हैं 100% ट्रू है मैडम, यस इट इज़ 100% ट्रू, यही टैरो आपको दिखाया जा रहा है उनके लिए। सो ऑल द बेस्ट मानसी जी, कुछ कीजिए ताकि चीज़ों को पॉजिटिव लाइट में ला। अब आप एक्चुअली यू शुड बिकम मेंबर मानसी जी, और फिर हम बात करते हैं। ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, यस ही इज नॉट, ही इज थिंकिंग टू मच, बट दैट इज फॉर श्योर मानसी जी। सो दिस इज इट। एंड आप मानसी जी, आप व्हाई डोंट यू बिकम ए मेंबर, और आप फिर 2024 में आगे आने वाले समय की रीडिंग आप ले सकती हैं, क्योंकि सैटरडे को हम मेंबर्स की रीडिंग हम करेंगे। And Mansi, thank you so much for your valuable response and precious time. I'm here to guide you, all of you, through tarot, and I feel that you get a proper guidance so that you can act upon, Mansi ji.
हाँ, तो व्हाट आई एम सेइंग कि मानसी जी आप मेंबर बन जाइए और फिर 2024 की रीडिंग होगी। इसके अलावा प्रायोरिटी रीडिंग सभी को मिलेगी जो भी मेंबर्स हैं। इसके अलावा आप एन नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो डिसाइड अपॉन दैट एंड ऑल द बेस्ट मानसी जी। नाउ कमिंग टू माय वन कार्ड रीडिंग, मानसी पूछ रही हैं क्या मुझे ऑनलाइन स्टॉक करते हैं? बिल्कुल हाँ करते हैं। यस कार्ड है आपके लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं और ओके एंड ज्योति कुमारी, ओके 1 मिनट। ज्योति कुमारी दी अजय कभी मेरे पास कॉल करेंगे या नहीं? तो कार्ड नंबर पहले एक ही क्वेश्चन लेती हूँ कि आपके पास कॉल आएगी, इसका प्रश्न मैं देती हूँ। आपने कार्ड नंबर 2 चुना है। देखिए ऐसा है कि कॉल तो आपके पास कभी ना कभी आएगी। फिलहाल जो माइंड स्टेट है अजय का वो एक्चुअली कैजुअल है। वो सोचते हैं चलो कर लेता हूँ, फिर भूल जाते हैं, फिर करते नहीं हैं। कैजुअल अप्रोच है अभी ज्योति कुमारी जी। तो इतना सीरियस जो होता है ना कि मुझे करना है या मुझे ज्योति कुमारी को कांटेक्ट करना है, बात करनी है, पूछना है कैसी हो ज्योति। सो ऑल दैट इज सोच तो रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। लेकिन इसके साथ भी ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर वो नहीं कर रहे तो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी पॉजिटिव प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो आप अगर चाहें तो उसको आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि अभी तो अजय के दिमाग में बहुत सारे ना फेक आइडियाज, ख्याली पुलाव, ये सारी चीजें चल रही हैं। सीरियसनेस नहीं दिख रही है। और फिर ज्योति कुमारी का ऑलरेडी हो गया है। ओके चांदनी, क्या ए ने अपनी फैमिली में बताया है मेरे बारे में? कार्ड नंबर 2 नहीं, एक्चुअली नहीं बताया है चांदनी जी। और आपके लिए भी एक गाइडेंस ये भी है कि थोड़ा, क्योंकि अभी अगर आप रिलेशन में हैं और अगर आप सीरियस हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं तो ज़रूरी है कि एक बार अपनी इस रिलेशन को इंट्रोस्पेक्ट कर लीजिए एंड इवैल्यूएट कर लीजिए, उसके बाद ही कोई नया कदम उठाइए। एंड देन वी हैव व्हाट्सएप अनब्लॉक करने के बाद क्या अंशुल खुद से बात करेगा? नहीं, ही विल नॉट। इवन दैन आपने अनब्लॉक किया है फिर भी नहीं करेगा, क्योंकि शायद किसी चीज़ को, हो सकता है रिलेशन को ही लेकर चांदनी जी, अंशुल जो है परेशान है और पॉजिटिव नहीं है। जब तक एक हैप्पी थॉट या पॉजिटिविटी नहीं आएगी ना, तब तक आपका ये जो आपसे बात करें ऐसा नहीं होगा। सो जब तक पॉजिटिविटी लाएंगे तभी आगे चीज़ें बढ़ेंगी। जनरल मैसेज प्रिया नायर बोल रही हैं, कार्ड नंबर 3। जनरल मैसेज आपके लिए बहुत पॉजिटिव है चीज़ों को लेकर। और जनरल आज या आपके आसपास के जो लोग हैं, आप शायद डिस्कशन करेंगी, पुरानी बातों को याद करेंगी और उनमें हैप्पी रहेंगी। हो सकता है आप जो आपके गांव के, आपके शहर के लोग से आपसे मिलने आए या आप उनसे मिलने जाए या फ़ोन पे बात हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आपको पुराने समय से कनेक्ट करेगा और उसको लेकर आप शायद नॉस्टैल्जिक भी रहेंगी। सो पॉजिटिविटी है, अच्छा है। सो आई थिंक टाइम हैज़ कम कि आप पुरानी चीज़ों, पुरानी इंसिडेंट से एक तो सीख लें या उनके तरफ उनके बारे में सोचकर खुश हो जाएं, बिकॉज खुश होना भी एक बहुत बड़ा एक मोमेंट है जो आपके लिए पॉसिबल है आज आपके। तो ऑल द बेस्ट। सो अभी मैं आपको बता दूं हमारे पास 6 एंट्रीज आई हैं, 6 एंट्रीज फॉर दिस लकी ड्रॉ। ये मशीन जनरेटेड ड्रॉ है, तो जल्दी से जल्दी आप इसमें शामिल होइए। लेट्स फाइंड आउट हु इज द लकी वन टुडे। करना ये है कि एक्सक्लेमेशन साइन एंड जॉइन को टाइप करना है और इफ यू आर अ विनर देन यू विल बी गेटिंग वर्थ ऑफ 1000 रुपीज एंजल्स रीडिंग एब्सोल्युटली फ्री। सो ऑल द बेस्ट। Jyoti Kumari is saying thank you, you are welcome, and
Priya Nair, will D be nice to me always? Card number 2. No, not always actually. There's a bad energy which is circulating today. Priya, energy regarding D. So please, you have to be over cautious. Please do not take any new decision. It's a no card actually, Priya. Nitya Gowda. Madam, will I pass in signal and system supply exam which I had written? तो पहली बात है कि आपने अच्छी से तैयारी की थी कि नहीं? कार्ड नंबर 1, बिल्कुल देखिए अच्छी की थी, मुझे ऐसा लग रहा है नित्या गौड़ा. यस, कार्ड है आपके लिए, सक्सेस मिलेगी आपको. ऑल द बेस्ट. ओके, सो नित्या गौड़ा, ओके इनका हो गया है. प्रिया नायर का थर्ड क्वेश्चन है, विल एम स्टार्ट टॉकिंग टू डी सून? कार्ड नंबर 1. दूसरा क्वेश्चन है प्रिया, तीसरा क्वेश्चन है प्रिया का, प्रिया नायर का. और ये है, ये नो कार्ड है आपके लिए कि एम डी से बात करेंगे. अगर होगी भी तो या तो डी को या एम को कई सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, जिसमें हैप्पीनेस की लेस है हैप्पीनेस, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हैप्पीनेस भी सर्कुलेट होती है. ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. सो इट्स ए नो कार्ड. सो नित्या गौड़ा का दूसरा क्वेश्चन है, मैडम विल आई पास इन माई माइक्रो कंट्रोलर इन सप्लाई एग्जाम विच आई हैव रिटर्न? और आपने कार्ड नहीं चुना है नित्या गौड़ा, तो प्लीज सेलेक्ट द कार्ड ना. अच्छा, नीचे चुना है कार्ड नंबर 1. ओके, यहाँ पे थोड़ी चैलेंजेस दिख रहे हैं नित्या गौड़ा, और ये इसमें कंफ्यूजन भी है. यस तो कम है, कंफ्यूजन एंड नो ज़्यादा है. और आई थिंक जो प्रिपरेशन है या जो आपके थॉट प्रोसेस है इस सब्जेक्ट को लेकर, इसी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं नित्या जी, और उन्हीं चैलेंजेस से आप जूझ रही हैं, और उन चैलेंजेस को ख़त्म करने चाहती भी हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, क्योंकि अभी जो प्रोसेस है वो जूझ ही रहा है. तो अगर आप विच आई हैड रिटन, तो यहाँ पे इतना 100% पॉजिटिविटी नहीं आ रही है. लेकिन अगर आप दूसरी बार ट्राई करें इस एग्ज़ाम को, सेकंड चांस आपको मिले और अगर आपको मौका मिले, तो ये ज़रूर समझिएगा कि चीज़ों को स्ट्रेट करना है, ना कि कंफ्यूजन को हटाकर स्ट्रेट सब्जेक्ट में मास्टरी लाइए, सब्जेक्ट को पढ़िए विद अ मोर फोकस. दैट विल हेल्प यू. देन भारती साहू, क्या सुमित मेरे अलावा किसी और गर्ल से भी अपनी फीलिंग शेयर करते हैं? फॉर दैट प्लीज गो फॉर लव रीडिंग भारती साहू थ्रू सुपर चैट. चांदनी बोल रही हैं, थैंक्स अ लॉट मैडम, 4 दिन पहले बताया था. ओके, मैंने बताया था आपको, अंशुल ने मुझे अनब्लॉक कर लिया. दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ चांदनी. अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैडम यस ही अनब्लॉक्ड मी. ओके, दैट्स सो कूल एंड सो गुड. आई एम रियली हैप्पी फॉर यू चांदनी. जो हमने प्रिडिक्शन की थी वो सच हो चुकी है. तो इस जो मोमेंट को पूरा एंजॉय कीजिएगा, एंड डेफिनेटली और भी ज़्यादा प्रोफाउंडली इस पर काम कीजिए, फॉर हैप्पीनेस, फॉर जॉय. सो ऑल द बेस्ट चांदनी. ताशी इज सेइंग हेलो. ताशी, बहुत दिनों बाद कैसे हैं आप? नया साल आने वाला है, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि आपको नई सक्सेस आपको मिले, आप खुश रहें हमेशा. और फिर आपका प्रश्न है, शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट छोड़कर एक्साइज और स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना ठीक रहेगा? सो एक्चुअली पहली बात तो है कि दोनों ही एकदम पोल अपार्ट हैं आपके सब्जेक्ट. एक तो शीप हस्बेंड्री है विच इज़ अ वेटनरी आई गेस, और दूसरा है फिनेंशियल विच इज़ एक्साइज एंड स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट. तो आप दोनों में परिपक्व हैं, दोनों सब्जेक्ट्स में. तो ये तो पहले एनालाइज कीजिए. और आपने यहाँ पे शायद कोई भी कार्ड भी नहीं चुना है,
और आपको फिर भी मैं एडवाइस दूंगी। आपने कार्ड नंबर 2 जिना है, ओके। तो नीचे कार्ड नंबर 2 है। सो आप ये चाहती हैं एक्साइज और टैक्सेस आपके लिए अच्छा रहेगा कि नहीं, तो इसके लिए कार्ड नंबर 2 एक्चुअली नहीं रहेगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा अथक मेहनत करनी पड़ेगी और अभी सक्सेस की कोई राहें, कोई ट्रैक नहीं दिख रहा है, और मेहनत ही मेहनत दिख रही है, तब जाके कहीं जाके कभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो इस बेटर जिसमें आप परफेक्ट हैं, जो आपका स्किल है, आप उसी पे ट्राई कीजिए। ज़रूरी नहीं आप शिप हस्बेंड्री में जाएं, बहुत सारे वेटनरी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें आप जा सकती हैं। वाइल्ड एनिमल्स का लुक आफ्टर कर सकती हैं। करियर रीडिंग आप लीजिए, आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ताशी that will help you a lot to really zero in your choices। और हार तो कभी माननी नहीं चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर वेटनरी में है, शिप हस्बेंड्री वेटनरी है, तो आजकल काओ के रिलेटेड है या रैबिट्स के, जहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, वो चीज़ करिए। फिर भी मैं कहूँगी करियर गाइडेंस लीजिए, दैट विल हेल्प। Then will Sid come to India soon? ये चित्रा विजय पूछ रही हैं, yes या no? Yes, he can come and that will be mostly on materialistic ground, चित्रा। So though it's a yes card, but it's basically maybe professionally हो सकता है, emotionally इसमें कुछ भी नहीं है। जनरल लीडिंग फॉर सिड, जनरल लीडिंग आप कंफ्यूजन से भरी पड़ी है एक्चुअली सिड के लिए, क्योंकि ये नेगेटिव है जहाँ तक दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कार्ड की प्रेडिक्शन है, कई चीज़ें डिसाइड नहीं कर पा रहे, जहाँ पहुँचना चाहते हैं वो नहीं पहुँच पा रहे, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके लिए वो दुखी हैं। नेगेटिव एनर्जीज बिल्कुल अच्छे से दिख रही है सिड के लिए। सो दिस इज इट, इट्स ए नो कार्ड फॉर यू, फॉर सिड। चित्रा विजय। Then now we have 10 entries in this lucky draw जो कि machine generated है, तो जल्द से जल्द आप इसको join कीजिए। Let's find out who is the lucky one today, who will get angels reading worth of 1000 rupees, which is absolutely free. So all the best to all of you. Seema Biradar, general reading। कार्ड नंबर 1 जनरल रीडिंग आपके लिए मेहनत का संदेश लेकर आई है सीमा बिरादर। जो पहले आप कर चुकी हैं वो उसका कोई महत्व अभी नहीं है सीमा बिरादर। अगर आप सोच रही हैं कि कुछ आपने पहले काम किया वो कनेक्टिंग आपको सक्सेस देगा, तो ऐसा नहीं है। एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करने का इंडिकेशन है आपके लिए, चाहे वो आपका लव रिलेशन हो, करियर को नए तरीके से जॉब ढूंढने का हो। रिकिंडल इज द वर्ड फॉर यू सीमा, और इसमें मेहनत बहुत चाहिए, और एक पीछे जो छूट गया है, जो रह गया, उसको याद करके या उसकी तरफ आशा आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नई राहें बनाइए, नई चीज़ों करिए। सक्सेस भी अभी थोड़ा डिले से है, लेकिन मेहनत तो पूरी है सीमा जी, तो यू हैव टू लुक इनटू दैट सीमा बिरादर। तो अभी हमारी 12 एंट्रीज हो रही हैं, बहुत ही डायनेमिक का ये है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप माइंड जिम में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर भी आप विनर बन सकते हैं, और हम बहुत ही जल्दी वहाँ के लिए भी एक प्राइज लेकर आएंगे आपके लिए वेरी सून। तो आप अभी से ही अपनी आदत डाल दीजिए, डू नॉट मिस माइंड जिम क्विज, so to get to avail the prizes, so please do join after this tarot reading streaming. Now we have 12 entries in this lucky draw. Please join and let's find out who is lucky one to get the angels reading worth of 1000 rupees. At the same time, just want to tell you that we starting our streaming
at 10 a.m. every day, which comprises very, very interesting topics. Now we have Tashi Azum is saying, thank you. Tashi, from where you belong to, Tashi, if you can specify, I will be happy to know. And maybe that will be wonderful for us to know from which part of the world you are connecting to this streaming. So now I just want to ask you that in case if you want to use super chat or if you want to become a member, so please, this is the time, only 49 minutes are remaining. So please take advantage of the offerings which is there in this streaming for you for reading. You can get detailed reading also, not only one card reading, by using Angel's Deck, Oracle, Divine Reading and all that. So so this is it. I'm waiting for your participation as well as do participate in this lucky draw and take advantage of this draw to get Angels reading absolutely free. So जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि अभी इस प्रोग्राम के बाद होगा माइंड जिम, which is a very small quiz section, and after that हम winners की announcements करेंगे. So this is it. Okay, so I also want to inform you on coming Saturday, there will be only members reading for 2024. So फटाफट आप member बन जाइए. There's a join button. Join that. Click that join button and become member of Akulmach channel and avail this wonderful facilities of free reading for the members for 2024. At the same time, there's a priority reading for all the members. You can ask n numbers of questions, so it's most beneficial for all of you. आदिति गुप्ता कार्ड नंबर 2. आदिति गुप्ता कार्ड नंबर 2 आपके लिए बहुत ही वंडरफुल है. आज आपके लिए सक्सेस है, राइज ऑफ सक्सेस है. सब कुछ जो करेंगी बहुत ही पॉजिटिविटी दिख रही है आपके लिए आज. अगर देखा जाए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्या ना छोटी मोटी गलतियां कर लेते हैं और फिर उनका ध्यान नहीं देते. तो आप ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि छोटी गलतियां कभी कभी बड़ी बन जाती हैं. चाहे वो आपका करियर हो, आपकी लव लाइफ हो, कुछ भी हो, उसमें ये ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि गलतियों से बचें आदिति गुप्ता जी. लेकिन ये जो कार्ड है ये आपके लिए सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ें लेकर आया है. तो चीज़ें इस तरह से आपको अब करनी चाहिए आज की प्रेडिक्शन के बाद. आदिति, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले करें, जो उससे कम इम्पोर्टेंट है उनको बाद में ध्यान दें. दैट विल हेल्प यू. वैशाली, जनरल रीडिंग फॉर मी कार्ड नंबर 1. जनरल रीडिंग आपके लिए पॉजिटिव है. थोड़ा प्रैक्टिकलिटी और थोड़ा सा रियलिस्टिक गोल्स जो होगा, रियलिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग वैशाली आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है. मॉनेटरी गेन्स भी दिख रहा है आपको, पॉजिटिविटी भी है आपके लिए. बस यही एक एडवाइस दी जा रही है कि प्लीज़ बी प्रैक्टिकल and manage only the realistic goals for some time.
वैशाली, और बहुत ही जल्दी मनी को लेके शायद आपके पास कोई एक अच्छी न्यूज आ सकती है वैशाली। सीमा बिरादर, क्या मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत खुश है अपने हस्बैंड के साथ? बहुत ज्यादा खुश है सीमा बिरादर, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ये वर्ल्ड कार्ड है, डेट मीन्स पॉजिटिविटी, सेटिस्फैक्शन। इसके अलावा जो वो चाहती हैं एक नया साइकिल ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, पॉजिटिविटी अभी शुरू होने वाला है लाइफ में उनके। थिंग्स आर रियली रियली गुड। यहाँ पे जो अचीव करना चाहती हैं वो डेफिनेटली अचीव कर पाएंगी, एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी उनकी लाइफ में आएंगी फॉर बेटर। ऑल द बेस्ट सीमा बिरादर। वैशाली इज सेइंग थैंक यू, यू आर वेलकम। क्या प्रार्थना मेरे साथ लॉयल है? देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही डीप रूटेड क्वेश्चंस होते हैं हेमल जंग। ऐसा नहीं है, मैं अभी आपका पढ़ देती हूँ, बट आपको आइडियली यू शुड आइदर गो फॉर ऑरिकल रीडिंग, डिवाइन रीडिंग, एटलीस्ट लव रीडिंग, सो दैट विल हेल्प यू। तो जहाँ तक आपके पास लॉयल्टी है कि नहीं, देखिए लॉयल्टी ऐसे नहीं होती है, ये एक्चुअली उतना ज़्यादा 100% पॉजिटिविटी आपके लिए नहीं दिख रही है हेमल। इस लॉयल्टी को अटेन करने के लिए या पाने के लिए अथक मेहनत कभी कभी करनी पड़ती है। तो प्रार्थना से अगर आपको लॉयल्टी चाहिए तो आपकी तरफ से मेहनत, परसिस्टेंट हार्ड वर्क, कमिटमेंट, क्लैरिटी, ऑनेस्टी और इन सब चीज़ों को लेकर अगर काम करेंगे तभी आपको लॉयल्टी मिलेगी। तो अभी तो हम ये कह सकते हैं 100% यस आपके लिए नहीं है हेमल जान। ओके, तो सीमा ब्रदर बोल रही हैं थैंक यू। एंड सीमा ब्रदर का दूसरा क्वेश्चन है, क्या मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे याद करती है मैम? एक्चुअली नहीं करती है सीमा ब्रदर, होता ही है ऐसा सीमा जी, अच्छे दिन चलते हैं तो हम कई रिश्तों को भूल जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि एकदम याद नहीं करती, क्योंकि चॉइसेस हैं, शायद बिजी होंगी किसी चीज़ में, या क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि पहले आया उसमें उनको मिल रही होंगी तो उसी में बिजी होंगी। तो ये 100% पॉजिटिव नहीं है, चॉइसेस बहुत सारी हैं उनके पास, उसी में उनका दिल दिमाग लगा हुआ है। तो डोंट वरी, चीज़ें जैसा आप चाहती हैं कि वो आपको याद करें, तो फर्स्ट गिव हर सम टाइम। अदिति, नो किस बात का बोल रही हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके, देन वी हैव रुखसाना बानो। हाय ब्यूटीफुल सैफ, मिस मी? बहुत ज़्यादा मिस करते हैं रुखसाना एक्चुअली। लवर्स कार्ड है आपके लिए, तो आपको बहुत जल्दी, अगर आप बैठी सिर्फ सोच ही रही हैं कि वो सैफ मुझे मिस करें, और बस वो मिस करते करते फिर वो चीज़ें एकदम उल्टी हो जाएंगी। रुखसाना जी, सैफ आपको मिस करते हैं। डू समथिंग टू टेक दिस रिलेशन टू द नेक्स्ट लेवल। ऑल द बेस्ट। सोलमेट का रिलेशनशिप हो सकता है आपका, दिखाया जा रहा है। पूजा, कैसी लड़की है? इसके लिए तो आपको डिवाइन रीडिंग लेनी पड़ेगी चांदनी जी। And Seema is saying thank you, you are welcome, don't get disheartened Seema, just give some time. Sometimes giving big rope is the best way to bring people to you. तो ऐसा कुछ कीजिए, आप थोड़ा वेट कीजिए। क्या मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए? कार्ड नंबर
देखिए ऐसा है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव भी मूव ऑन। अगर हम जब एक वर्ड इटसेल्फ एक थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, बट यहाँ पे जो आपके लिए बताया जा रहा है कि एक न्यू बिगनिंग का इंडिकेशन है, तो उसको हम इस तरह से ले सकते हैं चांदनी जी कि आप एक नए सिरे से चीज़ों को हैंडल कीजिए, तो अब आपको न्यू बिगनिंग आपको सक्सेस मिल सकती है। या आप छोड़ना ही चाहती हैं, आपने डिसाइड ही कर लिया है कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए, तभी भी आपके लिए एक न्यू बिगनिंग वेट कर रही है। तो ये डिसीजन एंटायरली आपके लिए है। अगर आप बोल्डली चीज़ों को करेंगी, चाहे वो एग्जिस्टिंग रिलेशन में हो या आपके आगे आने वाले रिलेशन में हो, बोल्डनेस, न्यू वेंचर और गुड टाइम आपका शुरू होने वाला है। तो उसमें आप इसी सर्कल में रहना चाहती हैं, एकदम नया स्टार्ट करना चाहती हैं, ये एंटायरली आप पर डिपेंड करता है। Okay, Ruxana is saying, love you. Thank you so much for a beautiful message, Ruxana. And God bless. दिन बन गया आज, आपने इतना ब्यूटीफुल मैसेज मेरे लिए रखा है रुखसाना बानो। Nice guidance, Chandani. Okay, fine. Thank you. We have 14 entries now in this lucky draw. तो जो रह गए हैं वो फटाफट इसमें पार्टिसिपेट करें। ये लकी ड्रॉ है और ये मशीन जनरेटेड है। तो लेट्स फाइंड आउट कि आज कौन वो लकी वन होगा जिसको एंजल्स रीडिंग दी जाएगी, एंड विच इज वर्थ ऑफ 1000 रुपीज। तो मैं आप सभी को बताना चाहती थी, एक बार और रिपीट करना चाहती हूँ कि अब हमारी स्ट्रीमिंग शुरू होती है 10 बजे। हाय कोमल, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, कहाँ थी आप इतने दिनों से और क्या कर रही थी, कैसी हैं, पहले तो ये बताइए। और जैसा कि मैं बता रही थी कोमल को, सभी को, कि अभी 10 बजे शुरू होती है स्ट्रीमिंग और बहुत सारे वेरियस सब्जेक्ट्स हम कवर करते हैं, कोशिश करते हैं। अच्छा, आप अच्छी हैं, बहुत अच्छा लगा जानकर आपके बारे में। बहुत दिनों बाद आप आई हैं तो थोड़ा सा वरीड हो गई थी। एनी हाउ, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। और जो मैं बता रही थी कि 10 बजे शुरू होता है हमारा स्ट्रीमिंग, उसके अंदर अगर आप बिजनेस टिप्स का प्रोग्राम बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं अच्छी हूँ कोमल जी, बहुत अच्छी हूँ। और आप कैसी हैं? आपने कहा गुड हैं, तो अच्छा लगा जानकर। तो मैं बोल रही थी कि बिजनेस अगर स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो बिजनेस ट्रिप्स का प्रोग्राम आप कभी भी मत कीजिए, क्योंकि वेरियस टिप्स दी जाएंगे, वेरियस सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो टॉप कंपनीज का सेक्शन है, 10:30 के समय ब्रॉडकास्ट होता है। तो ये भी आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि आपकी स्टेट में टॉप कंपनीज कौन सी हैं उनके बारे में जानना आपका अधिकार है, ताकि आप अच्छे से जो भी जॉब सर्च कर रहे हैं वो आप कर पाएँ। सो डू जॉइन एट 10 and take advantage of all the topics which we are covering. और कोमल जी पूछ रही हैं आज क्या जनरल रीडिंग फॉर मी, कार्ड नंबर 1। कोमल जी
जनरल लीडिंग बहुत कुछ आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। आज आपकी विल पावर का बहुत बड़ा रोल होगा। अगर आप करना चाहते, एक बात होता है, हम सोचते हैं हम करेंगे फिर हम करते नहीं हैं, तो ऐसा मत कीजिए। जो भी आपका आज डिसीजन है, अगर वो पॉजिटिव है, आपने थॉट थ्रू कर लिया है पूरा अच्छे से, तो आपके लिए ज़रूरी है कि उस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि दैट विल ब्रिंग स्टेबिलिटी कोमल जी, और आपको थोड़ा सा पावर मिलेगी, और विल पावर के साथ जो भी काम किया जाता है उसमें डेफिनेटली बहुत स्ट्रेंथ आती है। और वो जो स्ट्रेंथ है वो दो चीज़ों में दिखती है। एक तो एफिशिएंसी, जो लगातार आपको उस पर काम करना चाहिए, दूसरा कि आपको आप जो गोल है वो आप अचीव कर पाएंगी। तो कंसंट्रेशन के साथ एंड विल पावर के साथ चीज़ों को आज हैंडल कीजिए, दैट विल हेल्प यू रिगार्डिंग योर गोल्स। ऑल द बेस्ट। श्योर, थैंक्स कोमल जी। आप बोल रही हैं 10 बजे जो प्रोग्राम को ज्वाइन करूंगी, थैंक यू सो मच। ज्वाइन, और कई सारे प्रोग्राम्स में एक हिस्ट्री का प्रोग्राम भी है कोमल जी, और इसके अलावा वास्तु टिप्स भी दिए जाते हैं। सो जो भी आपके इंटरेस्ट का है वो ज्वाइन आप कर सकती हैं, एंड एडवांटेज डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होती है किसी भी इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट की, अगर मैं कहूँ तो। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ये 14 एंट्रीज हो चुकी हैं इस लकी ड्रॉ के अंदर, और टैरो रीडिंग के अंदर ही टैरो रीडिंग के अंदर ही ना केवल 1 कार्ड रीडिंग है, बट आप सुपर चैट को अवेल कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। और मेंबर्स के लिए तो एडिशनल है चीज़ें, क्योंकि एक तो उनको प्रायोरिटी रिस्पांस मिलता है, दूसरा 2024 के लिए जो प्रिडिक्शंस हैं उनके बारे में बात की जाएगी कमिंग सैटरडे, फॉर एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल द मेंबर्स। सो ऑल द बेस्ट, बिकम मेंबर एज सून एज पॉसिबल। कोमल का दूसरा क्वेश्चन है, कार्ड नंबर 2, आज रात को मीटिंग है, उसमें जाना चाहिए कि नहीं? कार्ड नंबर 2, देखिए बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले कोई भी मीटिंग होती है या कोई भी मुलाकात होती है, उसकी थोड़ी सी तैयारी करना बेहतर रहता है, और यही आपको बताया जा रहा है कोमल जी। आपको एक्चुअली ऑर्गेनाइज करना चाहिए जो भी टॉपिक्स हैं, या मीटिंग का जो एजेंडा है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। प्लानिंग के साथ चीज़ें हैंडल करेंगी ना मीटिंग में, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ट्रैवलिंग है इस मीटिंग के सिलसिले में, शायद आपको ट्रैवल भी करना पड़े, तो वो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस कार्ड है आपके लिए। कोमल जी बोल रही हैं, थैंक यू, यू आर वेलकम। चांदनी, क्या ए मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं? बिल्कुल करते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा बिग यस है ही नहीं आपके लिए। ए आपको फॉलो करते हैं, और इंस्टा पे डेफिनेटली बहुत कुछ आप कर सकती हैं चांदनी जी, क्योंकि जो भी आपकी विश है आप इंस्टा के थ्रू एक्चुअली ये हैंडल कीजिए, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है आपके लिए। चांदनी, ऑल द बेस्ट। अजय की फीलिंग, कार्ड नंबर 1, अजय की फीलिंग आपके लिए थोड़ी पॉजिटिव तो है, बट साथ में पॉजिटिविटी के साथ कुछ चैलेंजिंग भी है। गरिमा सहानी, क्योंकि इस रिलेशन के लिए 4-5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और इसमें आपको इवेलुएट करना चाहिए। फर्स्ट इज़ क्लैरिटी, सेकंड इज़ कमिटमेंट, थर्ड इज़ ऑनेस्टी, एंड आप अचीव कर सकती हैं। लेकिन आज जिस स्थिति पे आप खड़ी हुई हैं, दैट इज़ लाइक ए डबल एज्ड सोर्ड। तो जिस
तरफ आप अपना रुख करेंगी उस तरफ ही पॉजिटिविटी आएगी। जहाँ तक आपकी फीलिंग अजय का है, तो अजय की फीलिंग को इस्टेब्लिश करने के लिए या अजय की फीलिंग में बेहतर से बेहतर लाने के लिए आपको कमिटमेंट, ऑनेस्टी, क्लैरिटी की ज़रूरत है। अगर ऐसा करेंगी तो ये डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए लेकर आ सकता है। आज ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है। गरिमा सहानी, चित्रा विजय, will Sunil create any problem for me? So ideally, Chitra Vijay, you should go for a deeper reading for this. Okay, let's पढ़ दे। देखिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अगर आएंगी भी या आप सोच रही हैं कि हो सकता है ये आ जाए, तो उसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी ऑलमाइटी एंजल्स आपको बता रहे हैं। तो प्रॉब्लम से पहली बात है घबराना नहीं है चित्रा विजय। दूसरी बात आपके लिए ये है कि चीज़ों में अगर कुछ गलत है तो एक अथॉरिटेटिव होकर नो कहना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके लिए चित्रा जी। तो ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी और पे नहीं डाल सकती, आपको सेंटर स्टेज लेना पड़ेगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये बिल्कुल विश्वास के ये यस कार्ड है, क्योंकि नेगेटिविटी नहीं है। तो इसका मतलब आपके लिए ज़रूरी है कि चीज़ों को प्रॉब्लम आएंगी तो उनको सॉल्व करने का जो स्ट्रेंथ है या वो मोटिवेशन है वो आप अपने अंदर बरकरार रखिए। इसके अलावा एक मैन की हेल्प अगर आप लें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, जो पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग मैन है, या गाइडेंस लें, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम को नहीं होने देंगे। दैट्स समथिंग लाइक दैट। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज चित्रा विजय, प्रॉब्लम्स अगर आएंगी भी, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, यस का इंडिकेशन है, लेकिन सॉल्व करने का बेस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आपको हेल्प अगर लगती है तो हेल्प लेने से बिल्कुल चूके नहीं, आप बिल्कुल हेल्प लीजिए। दैट विल एड ऑन टू योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्राची is saying Vipul like करने लगा है क्या मुझे? एक्चुअली आपको लव रीडिंग लेनी चाहिए प्राची। कार्ड नंबर 2 है। यस का कार्ड है आपके लिए प्राची, लेकिन इमोशनल होके चीज़ें नहीं आपको सोचनी चाहिए, प्रैक्टिकल होके सोचेंगी तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपका ये रिलेशनशिप। ऑल द बेस्ट। गरिमा सहानी, अजय ज्योति के लिए क्या फील रखते हैं? क्या फीलिंग रखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? अच्छा फीलिंग रखते हैं। मोर ओवर आई थिंक रिलेशनशिप ज्योति और अजय का एक मटेरियलिस्टिक कनेक्शन पर ज़्यादा उस पर जोर है, ऐसा कुछ दिख रहा है। लेकिन आपको अगर चाहिए तो डेफिनेटली आपको थोड़ा डीपर एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए इस पर फॉर मोर क्लैरिटी गरिमा। हालांकि यस है, बट थोड़ा मॉनिटरी रिलेशन ज़्यादा दिख रहा है इसमें। देन न्यू व्लॉग, रिया की करंट फीलिंग सुमित के लिए कार्ड नंबर 1 पॉजिटिव नहीं है, नो कार्ड है आपके लिए, और बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अगर आगे इसको रखना चाहते हैं रिलेशन को, या इस पर काम करना चाहते हैं तो। प्राची इज सेइंग थैंक यू, यू आर वेलकम प्राची। तो अभी हमारी 14 एंट्रीज हो गई हैं। लेट्स फाइंड आउट हु इज द लकी वन। वो आप फाइंड आउट कर पाएंगे ओनली आफ्टर माइंड जिम। और दूसरी बात है, माइंड जिम में पार्टिसिपेट करना ना भूलेगा। बहुत ही जल्दी माइंड जिम के लिए भी हम एक प्राइज लेकर आएंगे, तो अभी से आप हैबिट डाल लीजिए माइंड जिम में पार्टिसिपेट करने का।
बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कम समय के लिए होता है, बट इसके फार रीचिंग इम्पैक्ट होंगे अगर स्पेशली एक तो नॉलेज बेस आपका बढ़ेगा, यू विल फाइंड आउट वेयर यू स्टैंड। दूसरी बात है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्जाम्स की, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है टू चैलेंज योरसेल्फ, to know about new things, to find out where you stand in the competitive exam, and ऐसे आपको motivation भी मिलेगा. So all the best. We have 26 minutes left. तो अगर आपको सुपर चैट यूज़ करना है, मेंबर बनना है, तो अभी इज़ द राइट टाइम, क्योंकि अगर आप अभी मेंबर बनते हैं तो आपको इमीडिएटली आपको प्रायोरिटी रिस्पॉन्स मिलेगा. दूसरा, सैटरडेज को मेंबर्स ओनली का जो प्रोग्राम है, जो उसमें मेंबर्स ओनली की रीडिंग की जाएगी सैटरडेज को, और बहुत सारी बातें की जाएंगी 2024 के लिए. इसके अलावा भी आप n नंबर्स ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो दिस इज इट. सो you just become member. That will help you a lot. और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं सुपर चैट का, आप यूज़ कर सकते हैं मेंबरशिप का ऑप्शन, आप और ऑफ कोर्स पार्टिसिपेट करते हैं लकी ड्रॉ के अंदर. कितना कुछ ऑफर है आप सभी के लिए, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको फ़ायदा हो सके टैरो रीडिंग का, सो दैट यू कैन डिज़ाइन और यू कैन टेक क्रूशियल decision if you are confused at any point of time. जो tarot has a pseudoscience that will really help you in taking up new decisions, challenging decisions. So just put forward your questions. Let's do the reading today, right now. Please do share this streaming and please do subscribe our channel so that हम अच्छे से अच्छा काम आपके लिए कर सकें, अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन आपको दे सकें, अच्छा सा अच्छा आपकी हेल्प कर सकें. So please do subscribe this channel. So we all are working hard to bring change in your life, and only what we are asking, please do subscribe the channel, or please do share this streaming with others. So do you know that we have a Vaastu tips program in this channel, and where you can change a few directions, and by changing directions only you can bring changes in your life, you can attain success, prosperity, harmony, all that. So don't miss out this Vaastu advices in this streaming every day. मोनिका, क्या राहुल मुझे मिस करते हैं? कार्ड नंबर 3 मोनिका पूछ रही हैं. देखिए, राहुल की जो भी फीलिंग है
वो तो पॉजिटिव है ही मोनिका जी, लेकिन आपके और राहुल के बीच में कई सारे चैलेंजेस हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं। तो आपके लिए एडवाइस ये दी जा रही है कि पहले जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम एरिया है ना, पहले आपको उस पर वर्क करना चाहिए, ना कि राहुल पर। कि राहुल तो जो है वो तो है ही, बट जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं पहले आप उनको हटाएंगी, और जैसे ही वो प्रॉब्लम या चैलेंजेस आपकी लाइफ से हटेंगे इस रिलेशन को लेकर, राहुल और आपके रिलेशन को लेकर, तो जिस तरह की आपको सक्सेस मिलेगी वो बहुत ही परमानेंट रहेगी और आप विनर निकल कर आएंगी चीज़ों में। सो एक्चुअली आपकी सक्सेस वेट कर रही है आपके इस रिलेशन को लेकर, और उसमें पहला जो पड़ाव है वो प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करना का टास्क आपको करना चाहिए। दैट विल ब्रिंग सक्सेस, अ बेटर सक्सेस, अ बेटर फाउंडेशन। मोनिका जी, मिस किया आज, वो पूछ रहे हैं आप, मिस किया है आज? अगर देखें तो अभी चैलेंजिंग है। लेट्स फाइंड आउट। मिस किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मी कार्ड नंबर 3 मैंने आपके लिए दोबारा किया है, वो आज आपको मिस नहीं किया है उन्होंने आपको, तो यू हैव टू बेयर विद दैट। ओके, तो श्रीजा ने ज्वाइन किया है कॉन्टेस्ट, और वेलकम टू दिस लकी ड्रॉ। गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट श्रीजा। और अब आपका प्रश्न मैं ले लेती हूँ। विल एस ट्राई टू बार्ज इनटू माय लाइफ, कार्ड नंबर 3। ये डेविल कार्ड है। अगर वो करते भी हैं तो आई थिंक इट्स अ फेक का एफर्ट श्रीजा, सो इट्स अ नो कार्ड श्रीजा, you have to bear with that. Shija is saying thank you. You are welcome, Shija. God bless. तो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स एक बार मैं दोबारा कर देती हूँ आपके लिए। विल ही ट्राई टू कम इनटू माय लाइफ, दैट्स व्हाट वी हैव डन इट ना। नो, ही विल नॉट। ओके, आई विल रीड इट अगेन। आई गेस डिपेंड्स, इस के अंदर एक्चुअली आपके लिए श्रीजा आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, स्पेशली जो एल्डरली लेडीज हैं, या तो उस साइड की या इस साइड आपके साइड की, सो तभी ये काम होगा। ये यस कार्ड है, आएगा, ही विल ट्राई, बट सक्सेस के लिए थोड़ा हेल्प की ज़रूरत आपको पड़ेगी श्रीजा। सो ऑल द बेस्ट। तो एक ऑलरेडी मैं इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स मैंने दोहराई है एक बार, जाते जाते 18 मिनट्स रह गए हैं। आई डोंट वॉन्ट हिम टू। ओके, सो श्रीजा, बहुत ही कंफ्यूजन है आपके प्रश्नों में, तो मैं आपको एडवाइस करती हूँ, सभी के लिए एडवाइस है कि जो आप पूछना चाहती हैं उसको क्लैरिटी के साथ आप लिखिए, स्पेशली इन टैरो प्रेडिक्शन। दूसरी बात है कि ही वांट्स टू कम, यू डोंट वांट हिम टू, for that please go for a love reading or a divine reading that will bring you more clarity. आपने श्रीजा 3 बार क्वेश्चन रखा है। पहला कि he will barge into my life, वो एकदम आ धमकेगा आपकी लाइफ में, आपके लिए मैंने रीडिंग कर दी। श्रीजा, फिर आपने लिखा कि he will try to come into my life, इसके लिए भी मैंने आपकी रीडिंग कर दी। अब आप पूछ रही हैं I don't want him to तो आप इस सारी चीज़ों के लिए श्रीजा आई वुड एडवाइज यू आइदर गो फॉर अ लव रीडिंग, जहाँ पे एक कार्ड रीडिंग नहीं होती है बट एक डीपर एंड क्लैरिटी के साथ रीडिंग होती है। सो प्लीज़ आइदर यू बिकम ए मेंबर, तो वो आपके लिए मोस्ट कन्वीनियंट रहेगा श्रीजा। और अगर मेंबर नहीं बन रहे तो आप डेफिनेटली थोड़ा डीपर रीडिंग लीजिए। व्हाट यू वांट, व्हाट रेमेडीज यू कैन डू सो दैट ही शुड नॉट कम इन योर लाइफ, तो ऑल दैट। सो मैं एक बार फिर आपके लिए सभी के लिए रिपीट कर देती हूँ, इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि देखिए मंडे टू सैटरडे हम अवेलेबल रहेंगे इस स्ट्रीमिंग में। संडे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे फॉर टाइम बीइंग, और इसके अलावा
10 बजे शुरू करते हैं हम अपना स्ट्रीमिंग एवरीडे, और इसमें कवर करते हैं वेरियस सब्जेक्ट बिसाइड टैरो। टैरो लाइव तो है ही आपकी हेल्प के लिए, इसके अलावा अगर आप बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं तो इससे अच्छा, जो बिजनेस टिप्स से अच्छा प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप गाइडेंस पूछ सकते हैं, तो वो भी एक। इसके अलावा आपके स्टेट में टॉप कंपनीज कौन सी हैं इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, और वहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इससे अच्छा सेक्शन आपके लिए हो ही नहीं सकता। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, एक तो साइंस शो है, दूसरा हिस्ट्री टुडे या हिस्ट्री का शो है। ये दोनों ही चीज़ें आपका नॉलेज बेस तो बढ़ाएंगी ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बट आपको एक जनरल गाइडेंस भी मिलेगी। तो प्लीज डू नॉट मिस दीज ऑल्सो। इसके अलावा आपके पास आपके सपोर्ट के लिए माइंड जिम क्विज है, जो इस प्रोग्राम की इमीडिएट बाद होगा, और इसमें भी हम आगे आने वाले समय में एक क्विज के जो विनर्स हैं उनके लिए प्राइज लेकर आएंगे। बट ये भी आपको हेल्प करेगा, स्पेशली आपका नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इवन टॉप कंपनीज में भी जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें भी आपको हेल्प करेगा। सो प्लीज़ डू नॉट मिस आउट दिस। और इसके बाद माइंड जिम क्विज के बाद हम डिक्लेयर करेंगे अपनी जो आप 16 एंट्रीज हैं लकी विनर को, जो कि अवेल करेगा वर्थ ऑफ 1000 रुपीज एंजल्स रीडिंग एब्सोल्युटली फ्री। तो ये थी आपके पूरे स्ट्रीमिंग की आपके लिए अनाउंसमेंट, आपके लिए इंफॉर्मेशन। और अब बात करते हैं टैरो का। ऑलरेडी सेशन चल रहा है, तो आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं, डालिए अपने प्रश्न, और उसके लिए फिर हम आपकी रीडिंग करेंगे। तो डालना क्या है कि 1 कार्ड रीडिंग है हमारे पास, सुपर चैट है, आप मेंबर बन सकते हैं, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस हैं, और सारे ये ऑप्शंस इसलिए हैं कि आपको सही से एडवाइस गाइडेंस मिल सके, ताकि कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी मेजर डिसीजन आप लेना चाहते हैं बेस्ड ऑन टैरो, आप एक डिसीजन ले सकें। सूडो साइंस है टैरो, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और सो ये अनाउंसमेंट है, सुपर चैट यूज़ कीजिए या मेंबर बनिए। सो ऑल दैट is there. I'm waiting for your questions. So if you have any, please put. We have 14 minutes actually to be precise left. तो आप चाहें तो सुपर चैट यूज़ कर सकते हैं, और अगर इमीडिएटली आप मेंबर भी बन सकते हो तो इमीडिएटली आप क्वेश्चन भी इमीडिएटली पूछ सकते हैं। सो ऑल डिपेंड्स हाउ यू वांट टू यूज दिस स्ट्रीमिंग फॉर योर बेनिफिट। और अब हमारे बीच में है चंद्र सिंह, उन्होंने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया है। तो प्लीज यहाँ पे बने रहिएगा। थोड़े दिनों बाद क्विज के प्रोग्राम के बाद हम लकी ड्रॉ निकालेंगे आज, और देखते हैं आज कौन दैट लकी वन है जो लकी ड्रॉ जीतेगा, और उसको मिलेगी एंजल्स रीडिंग एब्सोल्युटली फ्री। नया साल आने वाला है, तो बिल्कुल आपने रेजोल्यूशंस तो बनाए होंगे सभी ने, कई लोगों ने नहीं भी बनाए होंगे, तो दैट्स ओके। बट एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि उस दिन थोड़ा सा चैरिटी, मतलब पहले दिन थोड़ा सा चैरिटी करना मत भूलिएगा, क्योंकि
जैसा कि सभी लोग बोल रहे हैं कि 2024 एक अच्छा कई राशियों के लिए एक्चुअली बहुत अच्छा है। और ये शनि का दिन है, तो जब हम शनि की बात करते हैं तो वो डेफिनेटली आपके कर्मों पर डिपेंड करते हैं। वो शनि आपके कर्म ज़रूर देखते हैं, तो चैरिटी करना बिल्कुल मत भूलेगा। दैट विल रियली एड इन योर गुड कर्मास। और एट द सेम टाइम भगवान को याद ज़रूर कीजिएगा उस दिन, क्योंकि जितना भगवान को याद करेंगे, जितना उनसे कनेक्ट रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी आपके दिलो दिमाग में, एंड चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। प्रेयर्स ज़रूर कीजिएगा, मंदिर ज़रूर जाइएगा ऑन 1st of January, so all that. तो जैसे कि भगवान को क्या चाहिए होता, भगवान को सिर्फ एक प्यार भरा में भी नमस्कार जो है, उतने से ही खुश हो जाते हैं भगवान। आपको एक कहानी बता देती हूँ, छोटी छोटी चलते चलते। क्या हुआ कि एक बार एक हलवाई थे मथुरा में। हलवाई रोज जाते थे कृष्ण भगवान के टेम्पल और वहाँ पर लड्डू चढ़ाते थे। एक बार इतने सारे कस्टमर आ गए तो वो जा ही नहीं पाए। भगवान के जो मंदिर के द्वार थे वो बंद हो गए, और जब भगवान के मंदिर के द्वार बंद हो गए और अब वो चढ़ा नहीं पाए। अब क्या है कि हलवाई को लड्डू चढ़ाने की आदत थी और भगवान को लड्डू खाने की आदत। उस दिन भगवान ने लड्डू नहीं खाया तो वो भी दुखी हो गए। तो क्या हुआ कि उसी समय जब दुकान बंद कर रहे थे हलवाई जी, उनके सामने एक छोटा बच्चा आया और कहने लगा कि मुझे लड्डू दो। तो भगवान ने कहा ठीक है तुम ले लो लड्डू, बस छोटे बच्चे को कौन मना करेगा। तो हलवाई ने लड्डू दिया, तो जो बच्चा था उसने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो हलवाई ने कहा कि कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो इट्स ओके, तुम खा लो, एक लड्डू में क्या जाता है, तुम खा लो। नहीं मैं तो दूंगा। छोटे बच्चे ने कहा मैं तो पैसे दूंगा। तो छोटे बच्चे ने एक कड़ा पहना हुआ था हाथ में, ब्रेसलेट पहना हुआ था, उसने फटाफट ब्रेसलेट निकाला और हलवाई को दे दिया और कहा कि मैं लड्डू लिया है और ये रहा इसकी कीमत। और तो उसने हलवाई ने सोचा कोई बात नहीं, बच्चे के जो माँ बाप होंगे उनको ये मैं वापस कर दूंगा, अभी तो मैं लड्डू दे देता हूँ। लड्डू दिया, बच्चे ने लड्डू खाया। और जब सुबह हुई सोने के बाद फिर भगवान के दर्शन करने जब सुबह गया हलवाई, तो वहाँ पता चला कि जहाँ पे जो मूर्ति है भगवान की, वहाँ पर उनके भगवान में जो सोने का कड़ा है वो एक हाथ में सोने का कड़ा है ही नहीं। अब तब उनको जो हलवाई थे उनको पता चला कि भगवान साक्षात उनसे दर्शन करने उनके पास आए थे। और फिर हलवाई ने कहा कि ऐसा ऐसा, पुजारी को कहा कि ऐसा ऐसा हुआ। पुजारी ने कहा अरे भाई तुम तो बहुत ही अच्छे भगवान के प्रिय इंसान हो, रोज लड्डू खिलाते हो, अब मेक श्योर कि एक एक्स्ट्रा लड्डू हमेशा रखना मंदिर में, ताकि भगवान के लिए कभी भगवान आपके बनाए हुए लड्डू मिस ना करें। तो इतनी छोटी सी भावना है भगवान के लिए उतनी ही ज़रूरी है। और ये आप ज़रूर कीजिएगा, भगवान पे विश्वास कीजिएगा। तो हमारे बीच में है चंद्रसेन सिंह, वो बोल रहे हैं व्हेन इज ब्रेन जिम स्टार्ट आफ्टर 8 minutes, सो जस्ट ट्यून इन Chandrasen Singh. So don't go away, participate in this. That will be very good for your mental ability to prepare for your exams. So all that. सो आई कैन सी कि कोई भी प्रश्न आ नहीं रहे हैं। 18 एंट्रीज हो चुकी हैं राइट लकी ड्रॉ में, तो अभी कोई प्रश्न नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि मैं अभी ये टैरो की स्ट्रीमिंग बंद कर देती हूँ। 7 minutes है और बहुत सारे लोग माइंड जिम क्विज के लिए वेट कर रहे हैं, तो चलिए उनको वेट क्यों करने दिया जाए। लेट्स गो टू द मेंटल एबिलिटी जोन and I'm closing this tarot for today. I will be meeting tomorrow. Till then, have a nice time. Good day to all of you.
Hello, friends. And are you ready for the mind gym? If not, I will give you another 30 seconds. Hello, friends. Are you ready now for the quiz? And by the way, if you're feeling lucky, you can actually follow the instructions and join our lucky draw. The lucky draw will be carried out after this quiz. All right, so let's move quickly to our first question today. And by the way, all the questions are based on the incident which happened today in our history. So here comes the first question. In the year 1934, who renames Persia as Iran? Who renames Persia as Iran is the first question. So, can you believe, friends, that the Persia was the original name of the Iran? However, we now call this country as Iran, which is mostly the Shiite population, and the Shiite population, largest country of the Shiite Muslims. However, it was known as Persia, very, very ancient civilization, one of the ancient civilizations existing in this land for almost 2000 years. Fought the Alexander. They were the major power back in the days. So, are there any answers for this? I see a couple of answers. Seema Barada says Reza Shah. Reza Shah. Okay, let's find out if your answer is correct. It is, of course, Reza Shah. Reza is the name, and his surname is Pahlavi. And way back in 1934, Reza Pahlavi Shah basically renames Iran from Persia. So let me display your name. Absolutely right, Seema brother. Perfect. And you got it right. So let's move to the next question real quick. In the year 1968, which Apollo mission returns to Earth, which was on December 27th? In the year 1968, which Apollo mission returns to Earth? And friends, as you know, that the Apollo mission is the mission for, sending the man on the moon. And the Americans wanted to basically win the space race by sending the man on the moon, simply because the Russians were able to launch the first spacecraft back in the days, and there was a Cold War going on, and the Cold War, because of the Cold War, there was a competition between East and West, primarily between US and the Soviet Union. Now, Seema brother says Apollo 8. Seema brother, your name is displayed on the screen. Let me see if your answer is correct. Absolutely correct, Seema brother. You cracked it. Apollo 8 returned to Earth after completing its journey towards the moon, and returned to Earth on December 27th. Way back in 1968. Very great job done, Seema brother. Now let's quickly move to the next question. In 1941, who became the first British Prime Minister to address a joint meeting of the US Congress? The very first British Prime Minister to address the joint sessions of the US Congress in the year 1941. So can you imagine that the British did not even visit the America after America got its independence for almost 200 years, almost 250 years. However, in 1941 it all changed because the world war is at war, and the West is power. So I see an answer
Edified Learning says Churchill. So Edified Learning, I'm displaying your name. And let's see if your answer is correct. Absolutely right. Winston Churchill. Winston Churchill is the right answer. Edify Learning, you cracked it. That is a correct answer. Good job, Edify Learning. So let's now quickly move to the next question. In the year 1943, British sinks which German battle cruiser? And there was a lot of scare about this battle cruiser in 1943. It was sunk by the British forces, British naval forces. Which ship was that? Let me see if are any answers. So, there was a big battle going on between the Allies and the Axis during the Second World War. However, during the battle, in 1943, the British naval forces were able to sink one of the, star of the German naval forces. The name of this battle cruiser, as the name suggests, battle cruiser, it's a huge ship. It must have been a huge ship which the Allies very badly wanted to sink. What was the name of this battle cruiser? So I don't see any answer. So friends, keep trying, solving this puzzle. Let me give you the answer in the meanwhile. The answer is the German cruiser, which is known as Kranhorst. Kranhorst. Very powerful ship, specifically designed to basically take on the Allies naval forces. And you know that the British had a very strong navy, and during the Second World War they had many ships. However, the German strategy was to build very big, huge, powerful ships. Eventually, even those powerful ships were sunk by the British forces. All right, let's move to the next one. In 1978, which India jailed former Prime Minister was released from jail today? Which is on December 27th. So in 1978, it's a very simple question especially for Indian. 1978, a former Prime Minister jailed was released on December 27th. Which was that? Any guesses, friends? So in the Indian politics, there has been ups and downs of all kinds. And the prime ministers were jailed because of certain activities, and finally this former prime minister was released on December 27th in the year 1978. Let's find out what is the answer. It is Indira Gandhi. Indira Gandhi was jailed because of certain